Hello everyone, welcome. Welcome, thank you for joining. Namaste, Sudhir ji. Namaste, how are you? I'm good, sir. How are you? Very good. Hello, Sudhir ji. Namaste. Anshuji, namaste, welcome. Your reading was amazing. Acha, thank you so much. Yeah. Thank you so much. So you must have seen. You haven't seen my dashas with the D1 only. You could, analyze quite well. Thank you so much. I hope सबको मिल गया, right? But you were right. My 8th house is very active this time. Dasha is also going on. So that is why I'm here with you. Acha, okay, very good. Shravan Kumar, welcome. Hi Mahesh sir. ji, Hi sir. Vishnu, Anil Kumar ji. So how are you feeling today? Casual discussion, 15 minutes. How are you guys feeling today? Excited? Excited. Very good. You remember everything from yesterday? Yes. Acha, very good. Right. So any comments or any questions or anything you want to share, please go ahead. Your way of teaching is very unique, Sudhir ji. Acha, It's very different and very easy and simple approach. okay. Thank you so much. And I really admire. I mean, you have spent so much time and effort that you analyzed everybody's chart. That is really commendable. Right. I think I went through 50 plus charts. Yeah, that is, Last I can 24 understand. hours. It is very time consuming and energy consuming also. Right. Yeah. So, we need to protect our energy also. And at the Yes. same time, we have to give out energy also. So, Right. okay. Because you come across all kind of charts, no? Yes. So that All really kinds. that really impact you also. Correct. Recording in progress. In level 6, we teach this. How to deliver a consultation, how to read charts by yourself, not getting drained at all. Right? We teach this in level 6. We do that. It is a very important thing. Okay. Anybody else? Thank you, Anshuji, for the kind words. Maheshji, go ahead. Please ask the question. You're muted. हेलो सर Yeah. Go ahead, Maheshji. सर कल आपने एक चीज बताई थी बी कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल Correct. सर अगर किसी की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो तो कैसे कंफर्टेबल रह सकता है सर इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में बहुत डिफिकल्ट है. I agree. तो सर थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके समझा दीजिए. अच्छा. इसको कितना भी मैं समझाऊं ना, इसको एक्सपीरियंस करना ही सही रहेगा. और एस्ट्रोलॉजी आपको ये करवा देगी. ठीक है. एस्ट्रोलॉजी, वंस यू गो वेरी डीप इनटू, वंस यू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड थिंग्स, राइट. फॉर एग्जांपल, हम जब बाहर जाते हैं, बहुत गर्मी लग रही है ना आजकल, जी हम किसको ब्लेम करेंगे? बहुत गर्मी अगर लगेगी तो सन को ब्लेम करेंगे, राइट. So we need someone to blame, no, all the time. Yes or no? Okay. So level 1 mein there is one therapy that happens automatically. That therapy happens. What is that therapy? You will end up blaming everybody. Okay, you will end up blaming every planet in level 1. Okay, namaste Vinodji. Right? And it's a therapeutic thing. Okay. Many people say that blaming is bad and you should not blame and you should take responsibility and all. But you know what happens?
once you understand the reason behind all of these challenges, and once you understand the, once you have something to blame, right? Yes. It becomes a therapy. Okay, it becomes a therapy. And I've done this myself also, right? मेरे life में इतने सारे challenges. I've ended up blaming everyone. Mars, Rahu, Ketu, Jupiter, right? Right? Jupiter, जी, तेरे जी, वजह से ये हो गया, right? Mars, तेरे वजह से ये हो गया, right? Right? जी, For example, Mars, Mars is the significator of brother, right? जी, जी, Siblings, right? And brotherly people, right? So I ended up blaming everything, right? When initially I was into this, right? And suddenly, within a week's time, and all, I started accepting my life very easily because I could start reading the patterns. No, acha. So, मेरे life में there is a brotherly person coming in. Okay, so this is the pattern that I can expect. Okay, and the moment that happens, no, once you can expect, or once you can kind of, uh, foresee a pattern playing again, immediately you are very calm. You know, okay, this is what is to be done. That is the therapy. And once you reach that level, no, immediately you will start becoming comfortable with uncomfortable, right? Because uncomfortable is coming. जी, See, when are we taken aback? We are taken aback जब वो uncomfortable एकदम अचानक से आ जाता है सामने, हम्म, राइट? लेकिन आप लेवल 1 लेवल 2 सीखोगे ना, अचानक से कुछ नहीं होगा लाइफ में. यू विल बी एबल टू सी थिंग्स कमिंग, राइट? और वो दुश्मन को कैसा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का एडवांटेज रहता है ना, राइट? अगर किसी रणभूमि आप देखो तो एक दूसरे को सरप्राइज करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद में ना एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद में कोई भी चैलेंज आपको सरप्राइज नहीं कर पाएगा. जी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? yes, sir, एंड दैट इज absolutely. अ वेरी बिग थिंग, राइट? यू विल नॉट बी लाइक हे भगवान ये कहां से हो गया, राइट? यू विल नॉट बी लाइक दैट. Okay, so I think astrology, learning astrology, understanding yourself itself is a kind of a big therapy, right? So I hope I have been able to little bit answer your question. Okay, but it is very difficult. I understand. Becoming comfortable with uncomfortable is very difficult. I know. Okay. सर एक क्वेश्चन और था मेरा हाँ, कि आपने सर जो बताया था एस्ट्रो सेज पर किसी की जिस कुंडली की डिटेल्स वगैरह भर दो तो उसका पूरा चार्ट निकल के आ जाएगा. जी जी. तो सर मैंने अपने भतीजे का डाला था, उसकी डिटेल्स मुझे प्रॉपर पता थी, अपना मुझे बर्थ टाइम एग्जैक्टली पता नहीं था, तो बार बार कुछ ना कुछ चेंज होके आ रहा था. अच्छा. बट सर मेरे भतीजे का नाम रेयांश है, और जैसे कि पंडितों वगैरह ने देखा है तो सबने उसकी राशि तुला बताई है, लिब्रा. जी. और सर एस्ट्रो सेज के अंदर उसकी राशि जेमिनी आ रही है. अच्छा. जी सर, मैंने आपको भेजा भी था सर अच्छा, वो, रहेगा तो कुछ आपने टाइम पूछा का था वगैरह, कि कुछ रहेगा, देखना पड़ेगा, राइट? जी सर, तो आपने मतलब पूछा भी था कि मतलब बर्थ प्लेस क्या है, तो मैंने दिल्ली डाल के रिप्लाई भी करा था, बट अब तो क्लास का टाइम हो गया तो शायद आप देख नहीं पाए अभी फिलहाल. हाँ बट सर देखिएगा जरूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई, हाँ, ठीक है. करेक्ट कीजिएगा सर. डेफिनेट डेफिनेट. ओके. जी, Anybody थैंक यू. else? Any questions? Any shares? Or after yesterday, how are you feeling? Do you feel astrology can be easy, can be simple? Let me know. Yeah, it was good yesterday, and I could able to learn, and I related my kundali with that. I Okay. tried to naming the rashis in the chart houses actually. Correct. Very good. Thank you for teaching this in simple way. Excellent. Excellent. Very good. Very good. Okay. Thank you so much, Selviji. Anybody else? Any questions? Any comments? Anything on a casual note you want to talk about? Can I share something, a very small thing? Sure, Anshuji. Please go ahead. Like yesterday we were talking and you were saying that Pandit ji se paat karwa liya, Akal sir Nivaran or Sade Nivaran, say ki, what is the harm in it energy is doing. So I just want to share
um, experience from my life. When my son was born, so he was 4 or 5 months old, and he was diagnosed with a very unusual disease which was not very common here. Not here, because we asked the doctor if there is a treatment abroad, so we are ready to sell off everything and we'll go abroad just Correct. for our son, so that he should be treated well. But the Correct. answer was there is no treatment Okay. anywhere. And then my mother-in-law, we belong to a Arya Samaj family, so how we believe in Havan. So idol Okay. puja is not there in our family. It's not that we are against of it, but we are into Havan and all. Excellent. So uh, she only suggested कि महामृत्युंजय मंत्र जो है will Correct. do, ठीक है. And you won't believe, she said कि 1.25 लाख माला करेंगे. 1.25 लाख माला means Right. every day and a whole night हम लोग Right. बारी बारी से बैठते थे. And she said कि खुद से करेंगे, किसी Excellent. से करवाएंगे नहीं, because जब तक हम खुद नहीं खाते अपना पेट नहीं भरता, Correct. किसी और के खाने से पेट नहीं भरता. And it took I think almost 20-25 days to complete all those chanting, Wow. and रात को भी बैठ के मैं कर रही हूँ, and my mother-in-law is doing, or my husband is doing, so we are writing कि how many malas, who has Right. done how many malas. So we used to Right. make a target कि आज मुझे 20 करनी है, आज मुझे 50 करनी है, जिसके पास जितना टाइम है Correct. अपने अपने हिसाब से. that. Right. And I'm telling you, the miracle happened in our life. Wow. Doctors, those who were saying there is no treatment for this disease, and today my son is doing very well. And I mean, uh, that is really with the, we can say, God's blessings, or my mother-in-law's blessings, or what was it, and it really paid to us. So Correct. तब से मुझे बहुत विश्वास है कि खुद से जो हम अपना जाप अपने लिए जो कर सकते हैं, nobody can do that. Very true. Very true. अंशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां for sharing this excellent story. Thank you so Amazing, much. amazing, and it's reality, right? It's reality. Okay, excellent, very good. So do yourself. Okay, that's the कोई भी remedy होगी. Okay, don't delegate. Right. Okay. Excellent. Anybody else? Welcome. Welcome all of you. Thank you so much for joining in today. So any questions or any comments or any casual thing you want to talk about or any story you want to share, please go ahead. And within 4 minutes, we are going to start today's session. Sir, myself as Shravan, and today I have received your readings and everything. Okay. But the chat, the first point has you said that everything, wealth and peace and everything, that was reversed to me is happening now in the situation, current situation. And apart from that, second point, you said that you have a miracle power, you have noticed or something, and Right. that was true. I noticed and I helped many people. For myself, it is not worked. It's not worked any time. But Okay. every time other people, if I For other people, it works. Okay. definitely, and what my I think that is a God gift for me. Yes. And who was if anything was lost and everything, I can imagine the way the place is and what was the cover and color and everything, and up to 90% accuracy I was and who will leave in within a week and everything I can imagine. Okay. And Very but good. I will not tell to them, but be Correct. careful because Correct. of I used to, if I say that, they will definitely blame me and everything, but that was true. And if anyone is consuming and everything at that past 1 week before, 15 days before, I come to know, and I'll say just congratulations, and after that they got some miracles in their life and everything. And gurus and everything, I have a guru and everything, but he gave any upadesh and everything, that's all. And after that I used to do the thing, and after that my guru, if I asked anything to him, he'll say, once the time comes, definitely I'll say, whatever you're doing, go ahead, that's all.
I keep on doing that thing. And I do meditation every day, morning and evening. And Very good. Very good. within Shravan. with that meditations only, I'll get thoughts if for someone what happens and everything. And I used to get dreams, and I done many astral travels as well. And one experience, my good experience was uh, once that when I doing astral travel meditation everything, and I got this my power, my soul was went and everything, and why it has came in my dream and everything. And then I started next day doing astral meditation, and I went through my house outside completely, and I Mhm. seen someone is wearing red shirt and cream pant. And all of a sudden I came back, and again I woke up, and then I went to that place, and I see different, that was the person was same over there. Then I checked that that was a ride. And Excellent. Very good. Interestingly, this time I saw a lot of people amongst you with magical powers. Okay. but the right path and everything, what the power, which level we have, that was not, we don't know. And what if we went for right way, right path and everything, we can help many Right. people and everything. And that power, and So what's the track, and that thing we Spider were missing. Spider-Man dialogue, with power comes responsibility, Yeah. Right. So, but a lot of powerful people in this group, huh? A lot of powerful people, a lot of magical people in this group. Okay. So I'm very happy. And welcome all. Thank you so much for joining in. Okay. A couple of more minutes. We'll wait and then we'll get started. We'll start with some revision, right? And then we'll go into the new learnings for today. Okay, so today we are going to learn the ethics of a professional astrologer. What are the ethics that we are supposed to follow? Because I'm sure many of you are going to become professional astrologers. All right. Sir, Yes, sir, Shubhamita. I have one request, sir. Yeah, go ahead. Sir, please wait for 10 minutes. Actually, मैं रास्ते में हूँ तो 10 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊंगी तो just Ha, 10 minutes. don't worry, don't worry. Come over in 10 minutes, okay? Thank you, sir. Okay. Right. So, what I was saying was today, so what was I saying? Ethics. Ethics, of the ethics. We are going to learn about ethics. Okay, there are some 9 ethics that I have kind of found out. Okay, I've written them myself. Okay, and I think these are the main ethics that an astrologer should follow. And many of you, I know, right? There is a inner feeling, right? Many of you, I think, are going to become professional astrologers. Okay, so congratulations for that. Give yourself a big round of applause. Okay, you are going to help a lot of people. Okay, the charts are amazing, right? The charts that I have seen are simply amazing. Okay, and as predicted yesterday, the same thing happened, right? Jupiter in either 4th or 1st or 10th, or so in the main 4 houses, 7th, right? Or Jupiter aspecting 8th, Ketu in 8th, right? Ketu in 2nd, aspecting 8th, and so a lot of common patterns I saw. Okay, right? And it was just amazing to read all of these charts. Okay, so every time I read these charts, my belief into astrology becomes stronger and stronger and stronger and stronger. Right? So I'm sure many of you are going to come ahead and become super strong astrologers. Okay, so congratulations for that. Okay, so let us, for next 10-15 minutes, let us do some revision of yesterday. Okay, what I'm going to do is I'm again going to open my chart, okay, and I'm going to ask you some quiz questions. Okay, and you can answer those quiz questions in the chat box, or if you want, you can unmute yourself. Namaskar, namaskar, Narendra ji, right? You can unmute yourself. Okay, जितने लोगों को possible है videos on रखिएगा so that I can connect with you and we can talk and all of that. Okay, so this is my chart, right? Okay, so this is my chart. Okay, so tell me, in my 8th house, which Rashi is there? Taurus.
Very good. Okay. Everybody agrees or anybody denies that or anybody is against that? Yes, it Yes, sir. Taurus. Okay. Right? Okay. Who is the Lord of Taurus? Shukra. Venus. Venus. Okay. So Venus को हम और क्या बोलते हैं? हमने कल देखा था राजा, रानी, उसमें वो इसमें कैटेगरी में वीनस क्या है? स्पाउस को कहते हैं सर। स्पाउस है ना? Hmm. Okay. प्रिंस की वाइफ, राइट? Yes, प्रिंस sir. की बीवी बोलेंगे, राइट? व्हाटएवर. ओके. एक्सीलेंट, वेरी गुड. अच्छा, इस मेरे चार्ट में हु इज माय असेंडेंट लॉर्ड? Venus. Who is Shukra. my Venus. Venus. Everybody agrees? Jupiter, अच्छा. Why Jupiter? 12th house. 12th house. D9 देख रहे हैं शायद ये। नहीं. अच्छा, ये नवांश मत देखना आप, ठीक है? Oh, sorry. लगना चार्ट देखना. ओके. Venus, sir, Venus. Sorry. वीनस. ओके, वेरी गुड. ओके, नवांश नहीं देखना. नवांश लेवल 4 की बात है. मैं कल नीट लास्ट टाइम पे पाया वीडियो देखा, आज से स्टार्ट किया मैं तो वेरी गुड, वेरी गुड. रिकॉर्डिंग देखा ना लेकिन आप? देखा रिकॉर्डिंग देखा. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. सो Thank you, sir. Thank you. वीनस इज माय असेंडेंट लॉर्ड. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है. एक्सीलेंट. अभी मुझे एक बात बताओ, मेरे 4th घर में कौन सी राशि है? मकर कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न मकर राशि Aquarius. 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 Aquarius है. कौन सी है? कैप्रिकॉर्न सर. कैप्रिकॉर्न मकर है, sir. Everybody agrees? Okay. Who is the lord of Capricorn? सैटर्न. Oh, Saturn. Right? Saturn is the lord. Shani Bhagwan, right? Is the lord of. Okay, very good. मेरी 12वीं राशि कौन से घर में है? 6th घर में। First, फिफ्थ घर में नहीं. छठे घर में सर. sixth घर में, छठे घर में. घर छठे घर में. Sure? Sixth घर में. Sure? 6th house है सर. हाँ जी. Yes, sir. नहीं. नहीं 6th ही है सर. 60 है पक्का? पक्का 6th में है सर. Okay, Main very राशि. good. Very good. Right, Pisces, right? Who is the lord of Pisces? Jupiter. Very good. Okay, excellent. So, give yourself a big round of applause. Okay. तो आपको अपना ascendant lord मालूम है? Do you know your ascendant lord? Yes. Yes, sir. You know your own ascendant lord, right? यस सर. Okay. अभी मेरे चार्ट में, in my chart, अच्छा, उसके पहले, okay, ये KE, okay, we'll start with the learning, okay. KE means Ketu, Ketu. okay. RA means Rahu, okay. अभी केतु और राहु हमेशा सामने सामने रहेंगे 180 डिग्री अपार्ट, ओके. डोंट वरी अबाउट द डिग्रीज, बट हमेशा सामने सामने दिखेंगे, ठीक है. ओके. PL मतलब? प्लूटो. वेरी गुड. PL स्टैंड्स फॉर प्लूटो, ओके. आपको नोट्स लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है. PL स्टैंड्स फॉर सर क्लियर क्या बोल रहे हैं? प्लूटो. प्लूटो अच्छा प्लूटो. हिंदी में भी प्लूटो ही बोलते हैं, राइट? ओके. SA स्टैंड्स फॉर सैटर्न. Saturn, Saturn. right? UR stands for Uranus. right? हिंदी में यूरेनस को क्या बोलते हैं? Uranus. नहीं. अरुण. हर्षल. Harshal. ओके. हर्षल. ओके. दिस इज यूरेनस, ओके. NE मतलब नेपच्यून. नेपच्यून. एक्सीलेंट, वेरी गुड. JU मतलब जुपिटर. जुपिटर. MO मतलब चंद्रमा. Moon. मून. वेरी गुड. ME मतलब
Mercury. Mercury, बुध देव, right? Okay. VE मतलब Venus. शुक्र Venus. Venus, right? शुक्र Correct. SU मतलब सूर्य रवि Surya. sun, सूर्य देव, right? Sun. MA मतलब Mars. 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 ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Another quiz, okay? मेरा सूर्य कौन सी राशि में है? Mesh. Aries. मेष राशि में Aries. क्या बात है, वेरी गुड। और कौन से घर में है? सस्तम Seventh. Seventh. सेवन, वेरी नाइस, क्या बात है यार, गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मेरे तीसरे भाव में कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून Neptune. Neptune. Which planet is there in my third house? Neptune. Neptune. क्या बात है, amazing. Neptune is sitting in which Rashi? 9. Sagittarius. Gemini. Gemini. Sagittarius Gemini? Leo. धनु राशि धनु राशि Ninth Rashi, right? Sagittarius अच्छा वैसे हाँ ओके ओके हाँ हाँ वैसे ओके वैसे ठीक है। My Jupiter is in which house and which Rashi? मकर राशि Fourth house. मकर राशि Correct. Capricorn. मकर राशि Jupiter is in Fourth Capricorn and it's fourth house. Correct. Okay, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दो, थोड़ा सा ट्रिकी कर दो, इज इट ओके? लेट्स सी, ओके, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, ओके? सर 1 मिनट, आपने हाँ। असेंडेंट राशि बोली थी, वो कैसे देखते हैं? असेंडेंट राशि देखो, ये फर्स्ट हाउस में जो हाँ। नंबर आता है हाँ दैट इज असेंडेंट राशि, ओके ओके ओके? एंड द लॉर्ड ऑफ दिस राशि इज असेंडेंट लॉर्ड, ओके ओके? ओके अभी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल आप सब लोग, बट आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, ओके? मेरे सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन से घर में और कौन सी राशि में बैठा है? मेष राशि में सर सप्तम स्थान में मंगल Is everybody agrees with them? मेरे हाँ, करें। सेकेंड साथ में सर सेवंथ हाउस में बैठा है तो सेवेंथ हाउस में राशि में। बैठा है मार्स। मीन राशि के साथ मीन नहीं मेष राशि के साथ First में है सर, first में है. Aries. Seventh मेष राशि के साथ है Aries. Sir, please अच्छा। repeat your question Okay, once. I will now show it. Seventh I will house show में। it to you. Okay, मैंने क्या पूछा था? मेरे सेकंड घर का लॉर्ड, राइट? Yes, sir. कौन से घर में है और कौन सी राशि में है? 7th घर में है सर और मेष Seventh राशि. house. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमें क्या देखना है? सेकंड घर देखना है। Saturn. सेकंड घर में कौन सी राशि है वो देखो, हाँ जी। कौन सी है? Scorpio. एट राशि है, Seventh is the Scorpio. eighth is Scorpio. करेक्ट? नाउ हु इज द लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो? No, so Mars. no. Mars. 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 Eighth is Okay, very Mars good. is sitting. Mars is sitting. Okay. Okay, now what Seventh. did I ask you? Correct. It is on 7. It is sitting. Second house ka lord is sitting in which house and which rashi, right? 7. So what will you tell me? Now you will check where is Mars. Yeah, Mars is in 7. Seven. Now Mars is in which house? the voice is breaking. Seventh house. First house. My voice is okay for everyone? First house. में. यस सर Yes, sir. Rashi It's okay. यस सर ये हाउस नंबर क्या है बताओ मुझे? First. Number. First सेवेंथ हाउस है ना ये? Seventh house. पार्टनर क्योंकि हाउस नंबर सबके लिए सेम रहेंगे। Okay, 7th house. में. सेवेंथ हाउस राशि, which राशि is Mars in? Aries. Scorpio. एरीज, ओके? समझ में आया? अंडरस्टूड?
Okay, Yes, another quiz. Okay, you guys are amazing, yeah. सर सॉरी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एरीज के बोले वृश्चिक भी तो मंगल ग्रह का ही है, वो उसको नहीं ले सकते? क्या क्या? 7th हाउस पे जो मार्स है, इसको एरीज क्यों लेंगे? इसको मतलब स्कॉर्पियन भी है। स्कॉर्पियो भी तो ले सकते हैं ना? हाँ करेक्ट। क्या ले सकते हैं? स्कॉर्पियो भी तो है मंगल की राशि। हाँ, लेकिन यहाँ पे 8 है ना, नंबर इज 8 नो यार। हाँ सेकंड घर में 8 नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे। जी सर। सर 7th हाउस में जो है ना? मार्स, सर 7th And हाउस it में is 1 sitting लिखा in- हुआ है ना, 1 लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट एग्जैक्टली, सो फर्स्ट राशि आएगी ना। ओके Okay. राइट, हाँ ठीक है Okay. सर, Okay, excellent, very good. थैंक यू। Now tell me, my 4th house lord, okay? My 4th house lord is in which house and which rashi? Second house and Scorpio सेकंड Rashi. हाउस, सेकंड My 4th house lord, okay? Saturn, 4th house का lord कौन है मेरा? Saturn. Saturn. Saturn कहाँ पे बैठे हैं? Where is Saturn sitting? सेकंड हाउस में। Second house. सेकंड हाउस में। Correct. Very good. And who is which rashi? मंगल का राशि स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में। Correct. Okay. Understood? Yes. yes sir. Right? Okay. ये हम क्या सीखे मालूम है आपको? ज्योतिष बोलेगा आपके पंचम स्थान का स्वामी इस घर में बैठा है, इतना हैप्पी है, इतना नाखुश है, इतना ये है वो है, राइट? वी आर लर्निंग दैट। ओके सॉरी टू इंटरप्ट, ये लास्ट वाला वापस समझा देंगे प्लीज? श्योर श्योर श्योर। देखो मैंने क्या पूछा था? 4th हाउस लॉर्ड, राइट? 4th हाउस में। सो 4th हाउस इज व्हाट? दिस, right? Which is the rashi in the 4th house? 10th rashi. 10th राशि, right? Who is the lord of 10th rashi? Saturn. Saturn is the lord of 10th rashi. गरम गरम। Saturn is sitting in the 2nd house. Correct. And in which rashi it is sitting? स्कॉर्पियो 8th rashi. Right. Okay. Right. ठीक है, अभी इतना ही अपन समझेंगे. We will not go to happy, not happy, or will not go to debilitated and all of that. Okay, will not go there, right? Okay. सर एक टेस्ट और। Right? Yes, Dr. Amita? सर वन मोर टेस्ट। अच्छा, one more test I'll take. Okay, one more test I'll take. Okay. Tell me, where is my 9th house lord sitting? Jupiter, 4th house. 9th house lord, which Ninth house, house. which नाइन्थ rashi? हाउस में तो कुछ बैठा ही नहीं। Fourth house. House Lord Fourth Mercury. house. 4th house in Capricorn. Sorry. सर मरकुरी है, सिटिंग इन 6th हाउस। मरकुरी है, मरकुरी 6th हाउस, 6th हाउस में बैठा है मर्क्यूरी। Correct. 6th हाउस में मीन Which राशि में बैठा है। rashi? मीन जुपिटर Very good. Very good. Okay. Give yourself a big round of applause. Okay. You have understood? सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, नहीं समझ आया कैसे किया ये? देखो 9th हाउस ये है, करेक्ट? हाँ, ये तो खाली है। Yes sir. 9th हाउस में इसका- कौन सी राशि है? थर्ड। राशि है। ओके ओके 3rd राशि का लॉर्ड कौन है? ओके। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी कहाँ पे है? 12वें घर में। नहीं, छठे। छठा घर 12वीं राशि। 12वीं राशि और छठा घर। ओके, छठा घर 12वीं राशि। सर एक बार और वापस से प्लीज समझाइए सर, ये वाला थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करिए इसमें प्लीज। इसमें मैं भी Thank you, कंफ्यूज हो गई। देखो अभी मैंने क्या पूछा था? ओके, सब लोग म्यूट कर लेना अपने आप को, ठीक है? सो मैंने क्या पूछा था? 9th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन विच राशि एंड विच हाउस, ठीक है? तो हम 9th हाउस देखेंगे, कौन सा है 9th हाउस मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बरोबर? इसमें कौन सा नंबर आ रहा है? कौन से नंबर की राशि है? 3 नंबर की राशि है, करेक्ट? अभी 3 नंबर की राशि के स्वामी कौन है? हु इज द लॉर्ड ऑफ
नंबर तो 3 नंबर की सर जेमिनाई पकड़ेंगे ऐसे। करेक्ट। जेमिनाई का है ना? लॉर्ड कौन है? जेमिनाई का लॉर्ड कौन है ना सर? मर्क्यूरी। जेमिनाई मर्क्यूरी का है। मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी। नाउ Okay, Mercury is in 6th house. 6th Okay, sir, house got and it, sir. 12th राशि। Got it, sir. समझ में आया सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आया? हाँ जी सर। Quickly look at your chart and type in the chat box, where is Jupiter sitting? Okay, simple question है, where is Jupiter sitting? In which house and which rashi? Type it in the chat box. Okay. 4th house. फर्स्ट हाउस लियो राशि. नहीं, type it in the chat box. Okay, अपना chart देखो and type it in the chat box. Where So is, please repeat the question. in your chart, where is Jupiter sitting? Okay. In your chart, where is Jupiter sitting? Which house, which rashi? Okay. समझ में आया? Okay. Very good. Very good. Okay. You know what you can do is, you can just pat yourself on the back and tell yourself, I am a genius astrologer. Okay. Do that right now. Okay? Pat yourself on the back and tell yourself, I am a genius astrologer. Okay. अभी करो आप. नहीं सर, बहुत कंफ्यूजन है. कंफ्यूज हो गए? सर नहीं, कंफ्यूजन तो है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है सर. अरे आ जाएगा ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें क्या है? सर जुपिटर इन फर्स्ट हाउस एंड राशि इज 7th. वेरी गुड. इसमें क्या कंफ्यूजन है? सिंपल है ना. जुपिटर यहाँ पे है, ये हाउस है और ये राशि है. ठीक है. ओके, प्राची जी बोलो क्या कंफ्यूजन है? हाउ कैन आई हेल्प यू? ठीक है. ओके. अभी I am going to reveal a big secret to you. Okay. Ready for a big secret? सर प्लीज, मेरे को जुपिटर मिल ही नहीं रहा. सर जेयू देखो, जेयू देखो. मैंने हिंदी में लिखा है. तो बृहस्पति रहेगा, गुरु, राइट. ब रहेगा, उसके नीचे वो ये करते ना, ब्र करते ना उसको. राइट. सर मेरे एक जगह कुंडली में GUL लिखा है. व्हाट इज GUL? अरे वो तो मैं भी देखते रह गया. राइट. हम चेक करेंगे बाद में कभी. ठीक है. सर मुझे ये तो 1 2 तीसरे घर में गुरु है. तीसरे घर में आई एम नॉट मिस्टेकन सो अनिल कुमार जी बोलिए. तीसरे घर में गुरु है आपके. ठीक है जी जी. वेरी गुड. कौन सी राशि आ रही है तीसरे घर में? राशि कौन सी आ रही है? वो नंबर देखो वहां. छठी राशि. वेरी गुड. राइट. एक्सीलेंट. राइट. सिंपल है. सर जुपिटर अपने ही स्वामी ग्रह में बैठा है. अरे वो सब छोड़ो अभी. राइट. हीरो मत बनो. ओके. धीरे धीरे. ओके. हीरो मत बनो. ठीक है. ओके. यस सर, वरना हम जैसा को दिक्कत हो जाएगी. राइट. हीरो मत बनो. ठीक है. अच्छा गुड, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. राइट. सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि आई एम कंफ्यूज्ड. ओके. यू आर नॉट कंफ्यूज्ड. ओके. यू नो. ओके. सिंपल चीज है. राइट. यू हैव टू लुक एट इट इन अ वेरी दिमाग सिंपल. स्लो चल रहा सर. अरे चलने दो, स्लो चलने दो. होमवर्क नहीं किया ना, इसलिए कल एक्सरसाइज करके नहीं आए. ठीक है. अभी और ये रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगे. राइट. सो यू कैन वॉच दिस रिकॉर्डिंग आल्सो मेनी टाइम्स. ओके. अभी ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू अ नाइस प्रैक्टिकल रेमेडी. ओके. वन मोर रेमेडी फॉर योर लाइफ. ओके. टू मेक योर लाइफ इजियर. ओके. अच्छा, कितने लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप एक्चुअली शेर हो लेकिन लोमड़ी बने फिरते हो? बी ऑनेस्ट. ओके. हाउ मेनी ऑफ यू फील यू आर एक्चुअली अ टाइगर और अ लायन, but you actually, I don't know, for some reasons, situation of life or something, you behave like a, what to say, a cat, for example. How many of you feel like that? एक feeling है अंदर से. Right. Let me know in the chat box. I am a lamb. Okay, Mishti. Right. Okay. You feel that, no? Okay.
So let us understand what exactly is happening. Okay, and I'm going to give you a very simple secret. Okay, और उसके बाद में एक assignment भी आएगी आज के दिन की, right? Okay, so if you look at my chart, okay, और अपने notebook में आप लिख लेना, ठीक है? Who is my ascendant lord? शुक्र Venus. Okay, तो आप अपने book में लिख लेना, write in your notebook, सुधीर सर का, or you know whatever you want to call me, right? Ascendant lord is Venus. ठीक है? Okay. Now, where is my moon? Which house, which Rashi? Where is my moon? Which house? Fifth house. Fifth house. Fifth house, Aquarius. 11 Rashi. Aquarium. 11th Rashi, Aquarius. Correct? Very good. Okay. So, Aquarius का Lord कौन है? Saturn. Saturn. Okay, now understand this very carefully. My moon lord is Saturn. Okay. Okay. My moon lord is Saturn. Okay. Write this down. कैसे देखना है इसको? जहां पे मून है वो वहां पे जो भी राशि है उसका स्वामी, राइट? उसका लॉर्ड. समझ में आया? सर यहाँ पे मून कहाँ पर है आपके इसमें? देखो सर, देखो मैम, कहाँ पे है? ओके 1 2 3 फिफ्थ हाउस में. करेक्ट. राइट. वेरी गुड. ठीक है, अभी फटाफट आपका देख लो, आपकी मून कौन सी राशि में बैठा है और उस राशि का स्वामी कौन है. दैट बिकम्स योर मून लॉर्ड. ओके, आपके चार्ट में मून कहाँ पे बैठा है एंड हु इज द लॉर्ड ऑफ मून, एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, क्रॉस चेक करवाना है तो कर लेना. Sir, in the 9th house and the Lord is Mercury. 9th हाउस में राशि कौन सी आई है किरण जी? Mercury. राशि कौन सी है? राशि Gemini. Gemini राशि. Correct, right? So the Swami of Gemini is Mercury, right? So your moon lord is Mercury. Okay. ठीक है? आचार्य मेरा जो 5वें घर में है मेरा चंद्रमा और 8वीं राशि है. करेक्ट. 8वीं राशि के स्वामी कौन है? 8वीं के तो मंगल है ना. करेक्ट, मार्स, राइट? सो योर मून लॉर्ड इज मार्स. ठीक है, राइट दिस थिंग डाउन. योर मून लॉर्ड इज मार्स. सर मेरा जो मून है वो 12th हाउस में है. ओके, राशि कौन सी है वहां पे? Pisces. ठीक है, पाइसेस का लॉर्ड कौन है? Jupiter. जुपिटर. सो योर मून लॉर्ड इज जुपिटर. Sir, yes, my moon is in the 4th house. Okay. And the Rashi is Cancer. And the Lord is Moon. Correct. So your moon lord is moon. Okay. ठीक है sir. Yeah, thank you. Very good. Sir, Yes, sir. my moon is in 3rd house. और Okay. 3rd house sir is Gemini. So उसका राशि कौन सी है थर्ड हाउस में? सर 3rd हाउस में तुला राशि है सर, लिब्रा. करेक्ट, लिब्रा. अभी उसका स्वामी कौन है, लॉर्ड कौन है लिब्रा का? शुक्र. करेक्ट. तो आपका मून लॉर्ड कौन हो गया? शुक्र हुआ सर. करेक्ट, वेरी गुड, अमेजिंग. सर मेरा मून लॉर्ड इज 12th राशि, Piscean, and head is Jupiter. Correct, your moon lord is Jupiter. Jupiter. Right? बच्चे समझ में आया सबको? अंडरस्टूड? ओके, ठीक है. अभी मेरा चार्ट देख के बताओ, हु इज माय सन लॉर्ड?
Who is my sun lord? Aries. Aries, sir. Mars. Aries. एरीज का लॉर्ड कौन है? Aries, sir. मार्स है। Mars. ठीक है, तो आपके नोटबुक में लिख लेना, सुधीर सर का सन लॉर्ड इज मार्स। करेक्ट? और अपने आप अपना भी लिख लेना, सन लॉर्ड कौन है? Who is your own sun lord? Write that also. Okay, now I'm going to reveal a very big secret. Okay. Now I will reveal a very big secret. Sir, my sun lord is number 9, Sagittarius, and Sagittarius is again Jupiter. Correct. So your sun lord is also Jupiter. So moon is also Jupiter and sun is Sun also lord is Jupiter. also Jupiter. ठीक है? सर मेरा सूर्य जो है 7वें घर में मेरा सूर्य है, पर इसमें 10 लिखा हुआ है। करेक्ट। सो 10वीं राशि कौन सी है? 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न। करेक्ट। उसका लॉर्ड कौन है? शनि। Correct. So your sun lord is who? Shani. Correct. Excellent. Very good. Sir, my son is in 11th and the Lord is Leo sun. Correct. 5th Rashi, right? So Leo is the Lord there, sun, right? Sir, मेरा sun So 10वें घर में है। एक मिनट. So your sun lord is sun only. Sun only. Okay. सर मेरा सन 10वें घर में है और उसमें दूसरी राशि लिखी हुई है, तो सन लॉर्ड टेरेस और वीनस। Correct. Very good, Vimal ji. Excellent. Yes, Charu ji. तो सर मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि जितने प्लैनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड होंगे। हर एक planet का एक lord होगा. Right now we'll focus only on 3, right? Ascendant, moon and sun. I will tell you why. Okay. So has everybody understood till now? So type in U in the chat box. Okay. Type in U in the chat box. Okay. If you have understood so far, just type in U in the chat box. Now I am going to reveal another secret. Okay. No one else will tell you this. Okay. Simple. Okay. सुधीर सर, Yes. अब मुझे एक बार असेंडेंट का फिर से बताएंगे सर? Ascendant के लिए look at the first house. और first house में जो भी lord होगा, राशि उसका lord, right? Okay. अभी okay, I hope you can see my screen, right? जहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ. Okay. So देखो, ascendant lord. अभी talk about me, huh? Talk about Sudhir Khullan. So मेरा ascendant lord कौन है? Venus, right? Venus is what? Spouse. Yes, sir. Remember? Yes, sir. You told me yesterday. Right. Okay. किसी का तो background. Okay. Right. So okay. So Venus is spouse. Okay. Excellent. My moon lord is कौन है? Saturn. Saturn. Saturn is what? Servant. सर्वेंट। Servant. सर आपका चार्ट ही इनविजिबल हो गया। हाँ मैंने बंद कर दिया ना, आपने लिखा होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है। So my moon lord is Saturn, servant, correct? And who is my sun lord? Mars. Mars. Mars is what? Warrior. 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 Okay. Right? Yes, sir. Now here is the beauty. Okay. Here is the beauty. Social life behavior. Okay. Personal life
behavior. Okay, and self या फिर behavior with self. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे मेरी लाइफ आसान करनी है, if I want to make my life super simple, I have to behave like Venus in my social life. I have to behave like a Saturn or servant in my personal life. Personal life मतलब क्या? अभी social life मतलब क्या? Professional life, right? My external connections, external contacts, investors, business partners, colleagues, right? That is my social life, right? I have to behave like Saturn servant in my personal life, right? पहले समझ लो फिर अपने लिए कर लेना. I will give you time, don't worry. And this is the exercise also. इसका मतलब क्या हुआ? With my personal people, मतलब people who are very close to me, right? Whom I am very emotionally attached with. Helpful. Right? I have to behave like a servant. ठीक है? And whenever I am alone, whenever I am with myself, okay, what do I have to do? I have to behave like a warrior. Okay. Now this simple thing makes life super simple. क्या होता था पहले मालूम है? I used to behave like a servant in my social life. Okay. अभी जहां पे I should have behaved like a spouse, I am behaving like a servant. What will happen? Everybody will try to take advantage of me. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. अभी servant मतलब क्या? Zero ego. Right? So even with my clients or even with my, I'd done job also for some time with my bosses, and I was like, yes, sir, ho jayega, sir. I will do it, sir. Right? And what used to happen? I used to work late nights, 18 hours a day, 20 hours a day. I was to work and work. Right? After astrology, I understood I am not supposed to behave like that at all. That was a lot of hard work, no money. Right? The moment I understood I have to behave like a spouse, right? Spouse matlab kya, right? Matlab, I have to be very charismatic, charming, entertaining, meri adaai dikhani hai, right? And all of that, right? Right? Spouse is a very feminine character. It's a very feminine role, right? So, I started behaving like that. Just to give you another example, right? Whenever client, started, so I used to have an architectural business also, right? So whenever the builder clients used to do a lot of chick sometimes. Okay. Earlier I was like, I was like this, my head used to be down, and the client used to be like, super bossy on me. Understood? Right? And I used to, end up, sir, let it go. It's okay. Don't pay me, pay me 10% less. I am okay with that, and this and that. Right? How many of you relate with whatever I am saying? Right? You're understanding, right? Okay. Right? So the moment I understand, I am not supposed to behave like a servant in my social life. I am supposed to behave like a spouse. The moment clients started doing chick, I was like, "Arre sir, right? Itna sa to baat ho gaya, sir. Don't worry, sir. We will rectify it. Don't worry." Right? What do you want to do? Chalo, don't worry. Let us go for a dinner. Okay? Or let us go for a walk. Okay? Immediately my attitude changed. Understood? And you know what? I used to make them pay also for the mistake that I am making sometimes. Okay? Right? Sir, जाने दो ना sir. Right? अभी बच्चा समझ के माफ कर दो sir. Right? This is all Venus talk. This is all spouse talk. Right?
and I used to, dress well, be presentable, very nice, charming, and all of this, right? And the client used to also, he used to completely succumb to me, right? And immediately I started making more money also, less headaches. I started handling my, employees also in the same way, and a lot of things started पानी changing, देती रहियो दोबारा आएगा right? I started changing. Okay, how many of you understood what I'm saying? Sir, this is a super tool. Super tool. ये तो tool Another thing, what life happened, बहुत another mistake what I used to correct. do is, I used to behave like a warrior at my home. In my personal life, I used to behave like a warrior. Now, how is a warrior? Super angry all the time, right? Wanting to, just cut everything, right? And, this is wrong. We will not do this, right? Straightforward, right? You are an idiot. I used to tell this to my brother also. You're an idiot. You don't know anything, right? And all of that. This is warrior's language, no? Right? Straightforward, on the face, okay? Right? I used to tell my mom, you have done nothing for me, and all of these things, right? This is the language pattern, right? After astrology, I understood, I am not supposed to behave like that at all, right? But till the time I understood, it was, I think, too late to handle things. But, I was supposed to behave like a servant in my personal life. Servant means what? Zero ego. There, in my personal life, I should have been like, yes, mom. Okay, bro. Right? I will do this. I will go to the market. I will bring the sabji for you. Don't worry, mom. Okay. I'll do the jhadu tadka also. Don't worry. Right? Right? I should have been like that. But I never did. I had, a very ego. And that was another mistake I made. Okay. So, whatever I've shared with you is a very simple, practical tool to make your life super simple. Okay. आपके लिए ये अलग रहेगा. Okay, it will be different for you. For everyone, the combination will be different. Some of you will be a king in your social life, right? But are you behaving like a king? Ask yourself. Okay, ask yourself. King मतलब क्या? Super ego, है कि नहीं? And you are supposed to behave egoistic. If you don't behave egoistic, बाकी लोग आके कुचल के कभी चले जाएंगे. You will have no idea. Sir, servant means कि we will be listening to everybody. Servant means being very humble, not necessarily listening to everybody. Okay, Saturn is also not only servant; it is justice also. Okay, when you come to level 1, you will understand more details of this. But don't worry. But be very humble. Okay, be very calm, cool, collected. Right? No raising your voice at all. Very calm, zero ego. Right? And it can be a very uncomfortable thing to do, by the way. Okay. Right? I have a confusion, sir. For example, if you are a Saturn ascendant, मतलब अगर social life में आप शनि हो, right? Your Lord is Saturn, servant. One of your life's purpose is to serve people without thinking about money. Anybody Saturn ascendants here? I am, sir. Okay, right? Money will come, no doubt. But if you run behind money, money will go even farther away. Okay. But if you run behind serving people without any questions, right? Do you need help? I am there to help you. Okay. It is super simple. Okay. Money will come. They will themselves give you. You are expecting 108 rupees. They will give you 1,08,000. But in my case, sir, it is totally different. I am serving, but really I am not getting money. I don't want even money, but I am not getting even money. Okay. I am doing Right. yeoman's job. Okay. Right. So understand this. Okay. This is a very simple way to simplify your life. Behavior with self means what? More on a soul level. Matlab, how many of you find time for yourself and sit with yourself? या फिर खुद को you take out for a movie or go to and eat a pizza or. So in my case, I am a warrior. Right? Warrior means what? What am I supposed to do in my me time? Maybe I am supposed to learn karate. Maybe. Okay, I'm just giving you ideas. What will a warrior do in his
own self time, right? What will a warrior do? Sharpen yourself. Right? या फिर I'll go and Sharpen yourself. play some sport, right? I can do that, right? Or I can watch a very warrior-like movies. Okay? Understood? If you are Jupiter, sir, you will be learning things or you are teaching things. Learning, teaching, okay? Everything comes there. Dharma, basically righteousness, religion also comes there, right? A lot of things comes there, okay? So your assignment for today is, okay? Okay, another thing I want to write there, okay? And this will be your assignment, okay? I have to solve my social challenges in a dash 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 like way, okay? अभी अगर मैं ये असाइनमेंट कर रहा हूं तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? सो मेरे सोशल चैलेंजेस जो भी होंगे, व्हाट डू आई हैव टू डू इन अ वेरी वीनस लाइक वे या फिर स्पाउस लाइक वे, करेक्ट? How many of you understood this? Have you understood this? Careful, we can say, or shining. Right. So आपको यहाँ पे जो है ना planet, आपके planet का नाम लिख देना, right? Sir? Write the planet name or write the behavior name, okay? Spouse, right? Sir? Yes. So what you're saying is when we are describing the ascendant lord, it will always be social. Whoever's ascendant lord, Right. it has to be social. At The this moon level, lord, right? At this level, you understand this much. Okay. Okay. When Sir, we I go have ahead, a question, sir. yeah, go ahead. So, if I am a Aquarian ascendant, so Okay. that means Saturn will be my Lord. Correct. And if it is in the first house only, Correct. Saturn is sitting in first Acha, house only. So forget. Don't worry about that. Where Saturn is Okay, sitting. We are just talking Okay. about your ascendant. So I have to behave like a servant, Correct. like What- qualities I don't need to have. Right? Correct. That doesn't mean you don't have to ask for money. Okay, you have to ask for money. But Yeah. say for example, okay, for example, how will a king ask for money? A king will not ask for money at all. He will send his people to ask for and collect money and get the money. Right? That is what a king will do. How will a queen ask for money? Again, queen will herself not go anywhere. Right? What will the queen do? Queen will tell the king or the prince, right? Hey, listen, this person owes us this much, right? You need to get it by this time. That is what a queen will also do. What will a prince do? If prince is going to ask for money, how will a prince ask money? Prince is like, a prince wants to, very diplomatic, right? So what will the prince do? Prince will call the person up, arrange a party maybe, or take him to a dinner or a lunch, or have a nice conversation. Because when you come to level 1, you'll understand all of this. Goody. Correct, very nice. And suddenly within the conversation, you'll just ask, right? Hey, I think you owe me some money, right? When can I expect that? Right? That is how a prince will approach this problem, right? How will a spouse approach this problem? Spouse will अपनी अदाएं यूज करेगी, right? नखरे कर करके नखरे अदाएं use करके, करके. correct, right? नखरे करके, right? So that is how she will ask for money. How will a guru ask for money? Sorry, a warrior. Okay, let's come to warrior. How will a warrior ask for money? Warrior will be like, hey, listen, you owe me money. This is the deadline. The money needs to get credited in this time. If it does not, we are going to, sue you. Something like that, right? That is the warrior way to ask money. And the guru? So will it then be a little more blunt? Yes, Mars will be very direct, no? Very honest. Guru. Direct and blunt. Yes. Right. How will a guru ask for money? Guru will be like, देखो बच्चा, आपका गुरु धर्म बनता दक्षिणा है, दे दो.
धर्म बनता है, you need to pay me. Okay, right? So there will be ego also, but there will be, you know, a kind of knowledge oriented thing around it. Okay, so you know they'll go on explaining also, right? अगर आपने time पे More पैसा नहीं in देगा the तो preaching what will way, happen? sir. Right, preaching, More in the exactly. preaching way. Very good, preaching, right? And servant, how will the servant ask for money? अरे यार दे देना यार, right? कभी देगा, I need it यार, right? Leading, huh? Right, and please give me money, right? Right, so this is how Shani will do it. Okay, Sir, so understood? one moment, sir. हाँ प्राची जी. Sir, so mine is Cancer. So Cancer Swami is Moon. So mine Lord is Moon, right? Correct, Right, no? very right, Thank you, sir. most welcome. Sir, 1 second. Yes. In my house, the Jupiter is ascendant, and the seventh Rashi is also in the first. That's mean my ascendant number is Guru, and the Lord is Venus. नहीं, can you tell me again? Ascendant में राशि कौन सी है? First house में राशि कौन सी है? Sorry, ये Jupiter. Jupiter की राशि है ना? So your ascendant lord is Jupiter. Ascendant Lord is Jupiter. Correct. And the seventh पे लिखा हुआ है, इसपे 7 का मतलब नहीं, अच्छा देखो, आपके घर में जुपिटर बैठे रहेंगे, बट राशि इज 7 क्या? हाँ जी, यही चीज मैं बोलना चाह रही करेक्ट. सो राशि का लॉर्ड कौन है? हूँ। राशि का लॉर्ड हो गया वीनस. वीनस, वेरी गुड. सो योर असेंडेंट लॉर्ड इज वीनस. असेंडेंट लॉर्ड इज वीनस. ओके, करेक्ट. तो मतलब कि इसमें जो जुपिटर का कोई वो नहीं रहेगा, वो बाद में देखेंगे हम. राइट नाउ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. ओके, वो बाद में देखेंगे. ओके सर. यस. हेलो. हाँ सर, अमरनाथ बात कर रहा हूँ. हाँ जी, गो अहेड. सर मेरा मतलब लग्न में फर्स्ट एसेंडेंट मिथुन राशि है, उसका स्वामी बैठा है 10th हाउस में मीन राशि में, तो उसका कैसा सर्वेंट आ गया ना? नहीं, वो स्वामी वामी का अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं. आपके लगन में कौन सी राशि है बताओ? मिथुन राशि. मिथुन राशि के स्वामी कौन है? मर्क्यूरी. करेक्ट. सो मर्क्यूरी इज द प्रिंस. Right, so social life behavior is like the prince. Simple. Okay, thank you sir. Understood. Thank you very much. Thank you. Sir, I have a question, please. Yes, sir. Sir, I have a slight confusion between a personal life and a self life. इसको थोड़ा सा explain कर दीजिए. Personal life में देखो, so to give you an example, this might not be true for everyone. Just to give you an example, okay? Personal life में जिन लोगों से आपका emotional attachment बहुत हो गया, your mother, father, your spouse, right, your child, right, आपका दोस्त भी हो सकता है, but it has to be a very emotional connection, right? Your mind needs to be thinking about these people. Okay, अभी बॉस के साथ कुछ लोगों का इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, बॉस के साथ मेरा कभी भी इमोशनल कनेक्शन नहीं हुआ, राइट? सो आई विल बी लाइक, नो, दे आर माई सोशल लाइफ, दे आर नॉट माई पर्सनल लाइफ. बॉस बीमार भी पड़ता तो भी मैं उठ के जाऊंगा नहीं, लेकिन घर वाला कोई बीमार पड़ता तो मैं आई विल बी तुरंत, मेरा माइंड विल बी विचलित, नो, माई माइंड विल बी लाइक टेंस्ड, राइट? सो दैट इज पर्सनल. And self is with yourself, right? So it's like, you know, when you are talking to yourself in a mirror, or, you know, you're talking to your soul, right? Something like that. Okay, so whenever you deal with yourself, right, you might be talking to yourself, no, how should I be doing this, or what should I be doing in my life, or, you know, am I doing the right things in life, right? All of these talks, no, that is yourself, that is your relationship with yourself. Okay, I hope that answers. सर, सन लॉर्ड में वीनस आ जाए तो क्या उसके एटीट्यूड हो सकते हैं? What? सन लॉर्ड सेल्फ में वीनस आ जाए. वेरी गुड. असेंडेंट में वीनस आ गया ना? असेंडेंट में नहीं, सन लॉर्ड में वीनस आ गया. ओके, वेरी गुड. इसका मतलब क्या? अपने आप को एकदम अच्छे से ट्रीट करना है आपको.
राइट वीनस मजा मस्ती मौज राइट तो मतलब खुद को कहीं पिक्चर पे लेकर जाओ राइट खाना पीना खाओ मस्त ऐश करो राइट ये बहुत जरूरी है आपके लिए ये टाइम निकालना सन लॉर्ड में अगर सन आ जाए तो सन लॉर्ड में अगर सन आ जाए तो राइट सो योर सोल इज लिविंग द लाइफ ऑफ द किंग राइट सो यू हैव टू थिंक right whenever you are sitting with yourself for your life what is the kind of kingdom you can build right or what kind of big things you should be doing actually right where should you be playing politics basically king is politics right king is also politics right तो मून लॉर्ड में सन आ जाए तो Sir, I want to ask. right I want to ask, sir. yes My ascendant is moon, and moon lord is Mars, and sun lord is Jupiter. ascendant is moon Anji. And moon lord is Mars, warrior and sun lord is Jupiter. sun lord is Jupiter okay so firstly with yourself you have to engage yourself in learning teaching and all of that that is going to make your soul very happy right because sun lord is Jupiter understood So I'm you are doing that it under your guidance. right very good And in your home or in your personal relationships you have to behave like a warrior Yeah. okay आप चुप नहीं बैठ सकते वहां पर if you stay silent right people are going to screw you Yeah. okay you can 100%. be angry also in fact you have to be because this is the life that you have chosen okay and in your social life right social life moon no what is your lord Moon. so you have to behave like the queen right the rani the royalty right that is how you have to behave What type of behavior it should be? so Means, queen will also be very political right so if you are working so you need to find your kings right because a queen is nothing without a king no so you need to find your king can be a person right whom you can guide you can advise you can strategize for them मतलब कंपनी के सीईओ होंगे उनको आप गाइडेंस दे सकते हो कंपनी के ओनर्स हो सकते हैं उनको आप गाइडेंस दे सकते हो बड़ी बड़ी फीस ले सकते हो राइट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ यू हैव चोजन अंडरस्टूड हाँ ठीक है सलाह देना फॉर एग्जाम्पल राइट सलाह देना लेकिन छोटे लोगों को नहीं बड़े बड़े लोगों को सलाह देना ओके हाँ उस वहां से तो थोड़ा बहुत पैसे जो आते हैं वहीं से आते हैं जी वहीं से आते ना बराबर ना एक्सीलेंट अभी ये अवेयरनेस आने के बाद थोड़ा बहुत नहीं बहुत बहुत पैसा आएगा क्योंकि आप वहीं पे फोकस करो और ऐसे बड़े बड़े लोगों को ढूंढो और उनको एडवाइस करते बैठो स्ट्रेटेजीज दो ठीक है जी है कि नहीं ठीक है जी अभी होल्ड ऑन अभी होता है सर ऐसा कि हेलो हाँ राजेश जी एंड दिस हैपेंड टू मी और मैं किसी को जो लोअर लेवल का बंदा जब उसको आई एम ट्राइंग टू गाइड हिम तो फिर मेरे को खुद ही कुछ वो लगता है कि यार नहीं कुछ मेरे को करना ही नहीं चाहिए जैसा जो आप बोले हो बिल्कुल 100% सही है 100% सही है ना ओके बिल्कुल बिल्कुल Sir, I have a question, please. Yes, Manisha ji. Sir, in my ascendant lord is Saturn. Okay. 10th house, Saturn. So how it says basically is a servant, right. So how does it reflect here? Like how would you explain this, sir? So in your social life or whatever work you do or whatever profession you choose, let it be very service oriented. Okay. Let it be very caretaking oriented. Okay. Okay. That will be much more easier for you to execute. Okay. Okay. Yeah. Acha. Now this is the assignment. I know everybody will have questions. Okay. Because everybody wants to know my opinion of what you, how you should be behaving. So this is your assignment. Okay. Remember this. Okay. This is your assignment. ये note कर लो आप. आचार्य ठीक है आचार्य मुझे आपकी थोड़ी एक मिनट अमरनाथ जी okay there is some background noise big time background noise is that okay
अमरनाथ जी कुछ तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके देखो, सो दिस इज योर असाइनमेंट जो मैं स्क्वायर में लिख रहा हूं ना, आपको क्या करना है, यू हैव टू सेंड मी योर असेंडेंट चार्ट, ठीक है, और ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखकर भेजने हैं, ठीक है। कौन से 3 फिल इन द ब्लैंक्स? आई हैव टू सॉल्व माई सोशल चैलेंजेस इन अ डैश वे, आई हैव टू सॉल्व माई पर्सनल चैलेंजेस इन अ डैश वे, आई हैव टू सॉल्व माई सेल्फ चैलेंजेस इन अ डैश वे, ओके। You have to send this as an assignment to me. Sir, personal challenge means personal life. Personal life में जो भी challenges आते हैं. Self challenges. Right, so self के साथ में, right, so self के साथ जो talk होगा, self बातें होंगी, right. With my spirit. Right, with your soul, right, soul level challenge. Soul, ठीक है sir. हेलो सर, अभी आपको क्या करना है? What I'm going to do is, Amarnath, can you mute yourself because there is some background noise, okay? Then you can talk later. What I am going to do is, I am going to check your chart and whatever statements you have written, and I am going to tell you whether you have done it correctly or not. Okay? When you come to level 1, राजा क्या होता है, रानी क्या होती है, उनका बिहेवियर पैटर्न्स एग्जैक्टली क्या क्या होता है, कैसे होता है, सर्वेंट कैसा होता है, राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, राइट, व्हेन यू कम टू level 1, राइट, एंड डोंट वरी, level 1 की फीस बहुत कम है. Please show your last screen, sir. I lost. I will, and I will share this in the WhatsApp group also, right? Ascendant chart is the Lagna chart, right? Birth chart, correct. सुधीर जी, I need to clarify one thing, you know. Yes, Anshu ji, please go ahead. ये जैसे अभी आपने लिखा कि I have to solve my self challenges in a warrior way because वहाँ पर Right. आपके पास है, Right. तो सेल्फ को तो हम अपनी सोल से ले रहे हैं ना, सेल्फ Right. इनर सेल्फ और Right, inner self, correct. तो मार्स मींस सोल से कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, दैट देयर इज सम, यू नो. Correct. So इसका simple meaning ऐसा है, my soul is a very warrior kind of a person, for example. Okay. Right? And I have to feed that warrior, else that soul will become super dissatisfied. Okay? How will I feed a warrior? I have to give a warrior battles to fight. Then only my soul is happy. Okay. Right? So whenever I'm sitting with myself, I'm like, you know, writing down what is the next battle to fight. Okay. So Understood? अपने आप को ही एक लाइफ में गोल देते रहना. Correct, right. Warrior who इसलिए गोल देना है. जी, ठीक है. Right? Well, I have a question, sir. Yes, Vikas, go ahead. Sir, ऐसा है कि मेरा जो ascendant, sun is placed in my 4th house. I'm a मिथुन लग्न, ठीक है. Now my 4th house is my Virgo, right? Okay. Now Virgo में, now when you're talking in terms of self, okay, तो self के लिए क्या consider करना है? वर्गो का स्वामी कौन है? सन लॉर्ड कौन है आपका? मरकुरी. सन लॉर्ड मरकुरी आया. मर्क्यूरी है? श्योर नो? ओके. हाँ, because it is placed in Mercury, sir. So Mercury is the prince, right? Okay. Mercury is what? Prince. So you have to sit with yourself. Prince को क्या करना होता है? Prince को prove करना होता है, right? So you have to sit and talk to yourself. What is the next thing I want to prove to myself? Right? Can I do this? Can I do this? Can I do that? Right? So what is it that you want to prove? Yeah, this next? makes sense. It makes sense. Everything makes sense. I know. Fine. Okay. Excellent. Yes. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Thank you so much. All right. We are moving ahead. Okay. So you remember the assignment, and don't worry. Assignment में गलत हो गया, no problem. I will correct you. Okay. I will send you an audio कि ऐसा नहीं है, ऐसे देखना है आपको, and this is how you have to go ahead. Okay. But did you like this concept? Right. Yes, super concept sir, super tool. मैं सर आचार्य, मुझे आपसे एक विनती है, मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, मुझे अभी हेल्प कर दीजिए. मैं अभी साथ के साथ आपको बताना अभी नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे हम, अनिल कुमार जी. ओके, आपको व्हाट्सएप चैट पे आप भेज दीजिए, वहां पे हेल्प कर दूंगा, ठीक है.
Okay. Yeah, I like to make just a small point. Mahesh Kumar ji, go ahead. Take a 2-minute break. Come back very soon. Okay. So I like to make a small point. Thank you, Nitin. Right. Hear me, sir? Sir, can I make a This. comment, please? हाँ आशुतोष जी. हाँ जी, सर ऐसा है कि like from my chart it is my social behavior should be like a prince. I'm like acting like a servant now. My personal life, I have to be a Mars. I mean, it's totally interchanged. I think that is the cause of missing. I think Correct. That is the biggest challenge, right? Problem कभी होती है लाइफ में, हम ये जब रोल जो है ना अदली बदली कर देते हैं ना, you know, फिर your life goes for a toss. Then you lose control of your life. Okay. सर जैसे अपने पर्सनल रिलेशन में प्रिंस का क्या वो रहेगा कि हर टाइम वो प्रूव ही करता रहे कि मैं इस बात के लिए ठीक हूँ. प्रिंस का दूरदृष्टि रहेगा. You have to work very intelligently. Okay. You have to work very intelligently. अपने Right? पर्सनल रिलेशंस में तो You have to be very diplomatic. अगर आप प्रिंस हो पर्सनल लाइफ में, you have to be very diplomatic. किसी को दुश्मन नहीं बनाना, लेकिन अपना काम करवा के लेना सबसे. ये जमना चाहिए आपको. ठीक है, अगर ये नहीं जमेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है. सुधीर जी एक प्रश्न पूछना. हाँ जी. पर्सनल लाइफ में मून ये है उसका यानी. अच्छा, ये जो अभी पर्सनल क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको व्हाट्सएप को जो रिप्लाई करूंगा ना, उसमें थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा, और ये सवाल आप खुद ही को क्लियर कर लोगे व्हेन यू कम टू लेवल 1. ओके. राइट. बिकॉज नहीं तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा. 9 के बाद भी पूछ सकते हैं ना, आफ्टर 9. क्या? आफ्टर 9 बजे के बाद जो आधा घंटा आप देते आफ्टर हैं. 9, राइट, वी कैन आस्क that time also. Yeah, You that can time, ask, yeah. right? That time also you can ask. Okay. Okay. अभी लेट्स मूव अहेड. ओके. अभी ये प्लैनेट्स के ऊपर एक छोटा नंबर दिख रहा है, प्लैनेट के साथ में ही. डू यू सी दैट? केतु के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है? 25. प्लूटो के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है? 9. यूरेनस के ऊपर 24. करेक्ट. सो ये क्या है? ये डिग्रीज है. ठीक है, ये डिग्रीज है. ओके. अभी फिलहाल इतना ही जान लो. ओके. लेटर ऑन विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस. सो दीज आर डिग्री ऑफ द प्लैनेट. दैट इज द डिग्री ऑफ द प्लैनेट. ओके. एंगल होता है ना डिग्री का, हमने स्कूल में पढ़ा था, वो उतने डिग्री पे वो प्लैनेट है. ओके. ठीक है. फिर आपको ये स्टार दिखेगा, राइट? देयर विल बी अ स्टार. यस सर. करेक्ट. अभी मुझे एक बात बताओ, समझ लो 2 कार्स जा रही है. एक कार समझ लो 60 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, kmph के स्पीड से जा रही है. दूसरी कार जो है पीछे से आ रही है, लेकिन उसका स्पीड 100 kmph, और आप ये फास्ट वाली कार में बैठे हो. ठीक है. ये फास्ट कार में बैठने के बाद आपको ये स्लो वाली कार क्या दिखेगी? आगे जाते हुए दिखेगी कि पीछे जाते हुए दिखेगी? पीछे जाते हुए दिखेगी. यस और नो? राइट. सिमिलरली व्हेन अर्थ दूसरे प्लैनेट के नजदीक आ जाता है और अर्थ का स्पीड फास्ट है, वो दूसरे प्लैनेट का स्पीड स्लो है, क्या होगा? अर्थ उसको ओवरटेक कर लेगी. अपन कहाँ पे बैठे? अर्थ पे बैठे हैं, है ना? तो अपने को क्या दिखेगा? वो जो प्लैनेट है वो पीछे जा रहा है. पीछे जाता है. राइट. इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड, वक्री. ओके. वक्री. तो आपके जन्म के टाइम वो प्लैनेट पीछे जा रहा था. जो भी वक्री होंगे वो प्लैनेट पीछे जा रहा था. ओके. अभी सिर्फ इतना समझ लो, बाकी और डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है. वक्री क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, हम वो सब में अभी जाएंगे नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा. ओके. धीरे धीरे करेंगे. ओके. व्हेन यू कम टू लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ओके, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डोंट वरी. ओके. तो अभी मेरे चार्ट को देखकर बताओ कौन से प्लैनेट्स वक्री है. टाइप इट इन द चैट बॉक्स. टाइप इट इन द चैट बॉक्स. टाइप इट इन द चैट बॉक्स. दैट विल बी बेटर. Plato, Uranus, Neptune, Venus.
आचार्य इस पे कोई साइन होगी? स्टार लिखा है, स्टार दिया देखो, हर प्लैनेट के आगे स्टार रहेगा। कभी कभी हैश होता है। अच्छा, जिसपे ये हैश या स्टार हो वही वक्री होता है। राइट, वही वक्री होता है, वही प्लैनेट वक्री होता है। मतलब आपके जन्म के टाइम अर्थ वाज क्रॉसिंग देम, राइट, या फिर अर्थ आगे जा रहा था, ये प्लैनेट पीछे आ रहा था अर्थ के पर्सपेक्टिव में, राइट। सो दैट इज व्हाई दे आर गोइंग बैकवर्ड्स, वक्री, राइट। ओके, इसको रेट्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, डिग्री समझ में आया? ये जो नंबर लिखा है ऊपर वो डिग्री है। स्टार समझ में आया? जो स्टार है दैट इज वक्री, अंडरस्टूड। और एक सिंबल आता है ऐसे अपवर्ड ट्रायंगल जैसा, राइट। किन किन लोगों के चार्ट में है? मेरे चार्ट में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के चार्ट में है। क्या चीज? अपवर्ड ट्रायंगल जैसा एक सिंबल आएगा प्लैनेट के बाजू में, राइट। अंशु जी यू हैव, आशुतोष जी यू हैव, एक अपवर्ड ट्रायंगल रहेगा प्लैनेट के बाजू में। मतलब लेट मी, ये मतलब ऐसा जुपिटर लिखा होगा और ऐसा एक अपवर्ड ट्रायंगल रहेगा, या फिर सैटर्न होगा, तो या उल्टा वी की भी बोल सकते हैं ना, करेक्ट उल्टा वी। करेक्ट करेक्ट, या फिर वीनस रहेगा और अपवर्ड ट्रायंगल होगा, राइट। ये ऐसा, ओके, ऐसा दिखेगा आपको। ओके, तो ये स्टार्स दो भी हो सकते हैं ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि तीन ही होंगे, तीन ही। कितने भी प्लैनेट्स को हो सकता है, डिपेंड्स, हर एक के लिए अलग अलग होगा। अभी मेरे केस में 1 2 3 4 5 6 6 प्लैनेट्स को ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। मेरे प्लैनेट में सिर्फ दो ही दिख रहे हैं। दो चार्ट, आपके चार्ट में 2 प्लैनेट्स आर वक्री, ओके। सर ये दो जो भी आपने बनाया है वर्टिकल, क्या बोल रहे हो? वो कॉम्बस्ट जो आप बोले ट्रायंगल जी, वो कॉम्बस्ट लिखा है, कॉम्बस्ट मींस क्या हुआ है? अच्छा धनंजय आप सिखाओगे? गो अहेड, राइट, ओके। इसको क्या साइड, आई विल टेल यू, ओके ओके। सो ये जो अपवर्ड ट्रायंगल होगा, राइट, प्लैनेट के बाजू में, इसको बोलते हैं, जैसे धनंजय जी बोले, इट इज अ कंबस्ट प्लैनेट। कंबस्ट मतलब क्या मैं बताता हूँ। कंबस्ट को हिंदी में बोलते हैं अस्त, अस्त, ओके। अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं एक स्पेसक्राफ्ट में बिठा दूं, ठीक है, और मैं आपको सन के ऊपर भेज दूं, राइट, क्या हो जाएगा आपका? भरता बन जाएगा पूरा, राइट, जल के खाक हो जाओगे, यस और नो, राइट, बिकॉज सन का साइज ही इतना बड़ा है, सन की एनर्जी इतनी बड़ी है, राइट। सो एनी प्लैनेट अगर आपके बर्थ के टाइम सन के नजदीक आ जाता है बहुत, राइट, देन इट इज कॉल्ड एज कंबस्ट। नहीं तो 8 घंटे की हो रहा है सर, अगेन एनी प्लैनेट अगर आपके बर्थ के टाइम, अभी मेरा ये जूम बैकग्राउंड देख लो, ठीक है, जूम बैकग्राउंड देख लो फॉर एग्जांपल, ओके, ठीक है, जूम बैकग्राउंड सन है, यहाँ पे है सन, करेक्ट। सन के नजदीक कौन सा प्लैनेट है? ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, करेक्ट, ये मर्क्यूरी है, राइट। अभी मर्क्यूरी इज नियर द सन, तो मर्क्यूरी क्या हो जाएगा? जल जाएगा, राइट। सो ड्यूरिंग माय बर्थ टाइम अगर मर्क्यूरी कम्स नियर माय सन तो मर्क्यूरी जल जाएगा, राइट। सो ये जलने का जो ये है सन के वजह से, सन के नजदीक होने की वजह से, इसको बोलते हैं अस्त, राइट, इसको बोलते हैं कंबशन। सर सिर्फ सन के लिए? सन के लिए, क्योंकि सन में ही वो पावर है जो अस्त कर सकता है, ओके। सर मेरे लग्न चार्ट में जैसे वीनस, सैटर्न और सन एक साथ हैं, और वीनस और जो ये है सैटर्न है वो कंबस्ट है,
उन दोनों के ऊपर वो है वो भी। अपवर्ड ट्रायंगल दिखेगा आपको। हाँ right? जी सब वो है। Correct. Okay, so Venus or Saturn are combust in your case. Okay, Yes, it is sir. always with the sun. Okay, only sun can make a planet combust. कभी नहीं होता. No other planet. Okay. Sir, I have a question. Yes, Deepansh, please. Hi, finally I can unmute myself. Yeah, very good. Chart में Neptune, Pluto, Uranus, ये जो हैं, right. We didn't really discuss their lords and all that stuff. Right. I'm a little confused what they have to do with. Right. So your confusion will go away in level 2. Okay. When we study Uranus, Neptune, and Pluto. Okay. All right. So right now you just just go do pranams to them and just leave them be, right? Let them be right now. Okay. Thank you for answering. Right. 1 second. Yes. जस्ट मेरे बेटे की जो जन्म पत्री है उसके अंदर लग्न कुंडली में प्लस लिखा हुआ है, प्लस मून प्लस मंगल मतलब मार्स, तो ये प्लस का साइन किस लिए दिया जाता है? मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज देना, अपन चेक कर लेंगे उसको क्या है। उच्ची का रहेगा वो, राइट, उच्ची का रहेगा। so different softwares give different signs, right? Okay. Sir, I have a question. Yes, Nitin. मेरे कुंडली में like sun and Saturn both are together. Correct. And Saturn में upward triangle है. And Very there is good. one more planet Pluto, but उसको triangle है नहीं. So नहीं वो सब इनके परे है, वो सब ये इसको ना यूरेनस नेपच्यून प्लूटो है ना, ये सब साइन लैंग्वेज के आगे है, राइट? दे आर हायर एनर्जीज. ओके, तो combustion इधर नहीं होगा, right? On right, Pluto. only Saturn is combust. Okay, consider Saturn as combust. And upward triangle and star, star meaning is Combust it is and going- retrogression together. Okay, okay, thank you. Okay, welcome. सर मैं एक सवाल करूं? हाँ जी, प्लीज प्लीज. सर मेरे 4th हाउस में जुपिटर है, सन है, वेनस है और केतु है, तो Okay. इसमें क्या सन के साथ जो है वो क्या कम्बस्ट ही रहेगा? नहीं, वहां पे साइन देखो ना, अगर साइन दिख रहा होगा आपको, साइन नहीं है सर, साइन नहीं है ना, तो नॉन ऑफ देम इज कम्बस्ट. तो दूर दूर रहेंगे, एकदम नजदीक नहीं आए होंगे, है एक घर में लेकिन दूर दूर रहेंगे. ठीक है? अच्छा. Okay, so don't worry. Sir, another question. Yeah, Deepansh, go ahead. All right. So the star mark in my kundali is next to Neptune, and that's the only one with star mark. That is the only star mark. Okay. Yeah, and I'm not really sure, what that means. This is on the 6th house with Uranus. Okay. Don't worry. We are not going into deeper meanings of this right Okay. now. Okay. Right now, I want you just to understand what is your chart about. Okay. What is your chart, understood. symbols, and all of that telling you. Thank you, sir. Okay. So you were born 90s, 95, something like that? Bunch? 1981, sir. 81? Yes, sir. अच्छा, okay. Okay, ठीक है. So ये समझ में आया सब? और एक टर्म, there is one more term in astrology जिसको हम बोलते हैं युति, right? या फिर conjunction. Okay? When 2 planets come together, or 3 planets come together, or 4 planets come together in one house or very nearby, okay, they are called as conjunction. Okay, abhi in my chart, which all planets are in conjunction? Mercury and Venus, they are in conjunction, yes or no? Yes. Yes. Right? Mars and Rahu. Mars, Rahu. Rahu. Yes, conjunction is there. Yeah. Uranus and Saturn, sir. Uranus and Saturn, very good. No. धनंजय अबे इसमें मत जाना आप, एकदम एग्जैक्ट इसमें मत जाओ आप. ओके ओके ओके. राइट, न तो आप सबको कंफ्यूज कर दोगे. राइट, आपका ये जो यस नो ये सब चीजें ना, वो आपके मन में चलने दो. अंडरस्टूड? आचार्य, ये कंजक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे? युति. युति, युति बोलेंगे. सर सेकंड भाव में आपके 2 है, ये भी युति है? सेकंड भाव में यूरेनस एंड सैटर्न. ये भी युति है? हाँ. ओके, मतलब एनी आफ्टर 1 के बाद जितने भी हैं वो सारे when 2 planets are close together, okay, okay,
उसका एक और स्पेसिफिक डेफिनेशन है, वो हम लेवल 1 में देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो, व्हेन टू प्लैनेट्स आर क्लोज टुगेदर। अभी फॉर एग्जांपल मेरा मर्क्यूरी वीनस देखोगे, मर्क्यूरी की डिग्री कितनी है देखो, 13 वीनस की डिग्री कितनी है देखो, 14 तो मतलब लिटरली बाजू बाजू में बैठे या फिर गोद में बैठे एक दूसरे के, ओके, बिकॉज डिग्री इज ऑलमोस्ट सेम, नो, राइट, दे आर लिटरली सिटिंग इन ईच अदर्स लैप, like second भाव में आपकी काफी दूर दूर है, but still it is called युति. right, you can consider it, right, you can consider it, they are there working together, okay, And युति का क्या मतलब होता है? they are working together. Saturn is, you know, teaming up with Uranus, okay, I'll explain you that also, don't worry, okay, slowly steadily we'll explain, okay. So जहां जहां युति होगी वहां पे group of planets will come together and work together. ऑफिसर काम चल रहा है. Okay. Okay. Understood? Everybody understood so far? Just type in U in the chat box. Just type in U in the chat box. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं. अगर जिस प्लैनेट से यू नो देयर इज रेट्रोग्रेशन, अगर स्टार मार्क है, ओके, जो प्लैनेट के ऊपर स्टार मार्क है, there are chances, okay, not 100% sure, we need to check other things also, but there are chances there is some past life connection with that particular planet, and jo bhi whatever significations of that planet are, there is some past life connection, okay. So just as a interesting fact that I have given you, okay, understood? So please repeat this, sir. Agar there is a star mark on any of the planet, ठीक है, that means if any planet is retrograde, वक्री है, right, so there can be some past life connection with that planet. Means अगर वीनस पे वक्री है तो? Correct, वीनस अगर वक्री है, वीनस आपका स्पाउस होता है ना, okay. तो हो सकता है वीनस के साथ में पिछले जन्म का कुछ तो है, right? और अगर सैटर्न है, मतलब मैं पिछले जन्म में भी सर्वेंटी थी. पिछले नहीं सैटर्न अगर है, तो सैटर्न अगर वक्री है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है पिछले जन्म का कोई दोस्त या पिछले जन्म का कोई सेवक इस जन्म में आपको वापस मिलने के लिए आया होगा, राइट. डोंट गो वेरी डीप इनटू दिस राइट नाउ. व्हेन वी गो टू लेवल 4 वी विल गो वेरी डीप इनटू दिस, ओके, बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड देयर विल बी, ठीक है, ओके. मरकरी हो तो? हाँ विष्णु जी, मरकरी हो तो? वक्री है तो वही बोल रहा हूं मैं, जो प्लैनेट वक्री है, ठीक है, उन प्लैनेट से आपका कोई तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है. जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओके, जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस, ओके. एनी डाउट सो फार? एवरीथिंग क्लियर, राइट? यस सर. राइट, ओके. One more fact, Rahu and Ketu are always retrograde in everybody's chart. Okay, you can write this down. Rahu and Ketu are always retrograde in everybody's chart. Okay, always. Remember this. Okay. नहीं रिमेम्बर करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज लेवल 1 में मैं दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली कैसे वो मूव होता है, कैसे सब होता है. आई विल शो यू. इसका क्या मतलब हुआ सर, इफ वी कंसीडर विद द प्रीवियस पॉइंट राहु और केतु का, तो कौन सा प्रीवियस पॉइंट? यू सेड ना कि अगर रेट्रोग्रेशन का नहीं, उसको अगर रेट्रोग्रेशन में कोई हो तो इट इज पास्ट वाला भी कोई कनेक्शन रहता है, तो उसको राहु केतु मतलब नहीं, उसको अभी आप कनेक्शन मत जोड़ना. ओके, दिस इज नॉट विद दिस, राइट. अभी यू नो इट विल बी बेटर इफ यू रिमेम्बर जस्ट व्हाटएवर आई एम सेइंग, ओके. ज्यादा मतलब निकालने अभी मत जाओ, ओके. आई वांटेड टू मेक दैट थोड़ा सा लाइवली. आई नो आप उतावले हो रहे हो, ओके. आई नो, ओके. लेवल 1 5 तारीख को ही चालू कर रहे हैं, इमीडिएटली वी आर स्टार्टिंग, ओके, सो डोंट वरी, ओके. अंडरस्टूड सो फार? डन, ओके. अभी let me give you another mind blowing secret, okay. Now अभी ये वाला चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये this I saw it in my dreams,
Okay, so there was some higher energy channelizing this to me, and no one else will tell you this. Okay, no one else will tell you this. So हमने अभी तक क्या क्या देखा? घर देखे, बरोबर है, राशि देखे, करेक्ट, प्लैनेट्स देखे, यस और नो? यस सर। ये सब चीजें हमने देखी, डिग्रीज देखी, राइट? अभी ये सबको एग्जैक्टली समझना कैसे, इसका मैं सुपर सिंपल सीक्रेट बताने वाला हूं. ओके, आवर सालसा मेथड सीक्रेट. ओके, सुपर सिंपल सीक्रेट. ओके, सो सुपर टूल. ओके, हाउसेस जो घर है, कंसिडर देम एज फैक्ट्रीज. ओके, जो घर है वो क्या है? फैक्ट्री है, राइट? अभी एनीबडी ओन्स अ फैक्ट्री है? किसी की फैक्ट्री है यहाँ पे कोई भी चीज की? अरे वाह धनंजय जी, किस चीज की फैक्ट्री आपकी धनंजय जी? गारमेंट फैक्ट्री है, अरे शर्ट बनाते वाह, हैं, क्या बात, शर्ट बनाते हैं, शर्ट. वेरी गुड. मेरा एक बिजनेस गारमेंट्स में भी है, बाद में अपन बात करते हैं इसको. यस सर. ठीक है, वेरी गुड, राइट? यस सर. या तो गारमेंट फैक्ट्री. ओके, गारमेंट फैक्ट्री में क्या दिखेगा आपको? गारमेंट्स की मशीनें दिखेंगी, यस और नो? यस सर। देयर विल बी मशीन्स इन द फैक्ट्री, राइट? अभी मशीन क्या क्रिएट करेंगी? मशीन, अभी धनंजय जी के केस में मशीन कपड़ा बनाएगी, शर्ट बनाएंगे. शर्ट बनाएंगे. एक मशीन है शर्ट बनाएगी, एक मशीन है पैंट बनाएगी, एक मशीन है समझ लो बेल्ट बनाएगी. अलग अलग मशीनें होंगी. समझ लो धनंजय की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और 20 मशीनें उसमें लगी हुई है. अंडरस्टूड? एवरीबॉडी अंडरस्टूड, राइट? अभी सो दीज हाउसेस, कितने हाउसेस है आप सबके चार्ट में? 12 हाउसेस. मतलब एवरीबडी हैज 12 फैक्ट्रीज अपने नाम की, राइट? मतलब चारू बत्रा फैक्ट्री नंबर 1, चारू बत्रा फैक्ट्री नंबर 2, चारू बत्रा फैक्ट्री नंबर 3, राइट? विमल चंडक फैक्ट्री नंबर 7, राइट? विमल चंडक फैक्ट्री नंबर 8. सो विमल जी के 12 फैक्ट्रियां हैं, चारू जी की 12 फैक्ट्रियां हैं, धनंजय जी की 12 फैक्ट्रियां हैं. अंडरस्टूड? यस सर. ओके, अभी एवरी फैक्ट्री हैज मल्टीपल मशीन्स. ठीक है, प्रोड्यूसिंग डिफरेंट रिजल्ट्स. समझ में आया? ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर फर्स्ट हाउस हम देखेंगे तो उसमें भी 10-12 मशीन्स लगी हुई है, राइट? एक मशीन है कॉन्फिडेंस की मशीन लगी हुई है. बैठ जा रहा हूं देख. अरे नरेंद्र जी म्यूट कर लिया. ठीक है, अंडरस्टूड? फर्स्ट हाउस में कॉन्फिडेंस की मशीन लगी हुई है, आपकी आइडेंटिटी की मशीन लगी हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप की मशीन लगी हुई है, राइट? ऐसे अलग अलग रिजल्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी हाउसेस नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको कैसे समझना है वो बता रहा हूँ. 6th हाउस में समझ लो इंसल्ट्स की एक मशीन लगी हुई है. ये मशीन में से सिर्फ इंसल्ट निकलेंगे बाहर, ठीक है? कोर्ट केसेस की एक मशीन है, राइट? इस मशीन में से सिर्फ कोर्ट केसेस बाहर निकलेंगे. अंडरस्टूड? ऐसे 12 फैक्ट्रियां हैं और 12 फैक्ट्रियों में अलग अलग टाइप की मशीनें लगी हुई हैं. ओके, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है दे आर हैविंग अ नाइस स्माइल ऑन देयर फेस. ओके, आई एम सीइंग दिस. ओके, राइट? ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड सो फार? या ओके, ओके. इसके बाद every factory has multiple machines producing multiple different results. Okay, अभी नेक्स्ट चीज, अभी मशीनें में सिर्फ कंक्रीट रख दूं, फैक्ट्री में सिर्फ कंक्रीट की बना लूं, उसको अंदर कुछ नहीं करूं, डेकोरेट नहीं करूं, कुछ नहीं करूं, तो कैसे लगेगा फैक्ट्री? अच्छा नहीं लगेगा ना फैक्ट्री, राइट? फॉर एग्जाम्पल
ठेले पे चाय पीना और स्टारबक्स में चाय पीना, देयर इज अ डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस है? एम्बियंस एम्बियंस, राइट, एम्बियंस, माहौल, राइट। सो राशि is equal to ambience in the factory. ठीक है, राशि is the ambience in the factory. समझ में है? क्लियर है? अभी माहौल अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा ना आपको, और माहौल बहुत बुरा लगेगा, बुरा रहेगा तो आपको बुरा लगेगा, करेक्ट। अच्छा अच्छा, इन मशीनों को चलाने के लिए कौन चाहिए? लेबर। वेरी गुड, वेरी गुड, लेबर चाहिए। तो अपने चार्ट में लेबर कौन है? Planets are the laborers, right? Yeah. So planets is equal to workers, correct? Workers क्या करेंगे? मशीनों को चलाएंगे। अंडरस्टूड? वर्कर्स क्या करेंगे? मशीनों को चलाएंगे, राइट? अभी लेट अस लुक एट दिस इन माय चार्ट। मेरा चार्ट देखो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पहले फैक्ट्री में, पहले घर में कौन कौन वर्कर्स हैं? केतु और प्लूटो। केतु। वेरी गुड, गिव योरसेल्व्स अ big Pluto round and of Ketu. applause. Big round of applause, right? Big round of applause. Very good. Okay. अच्छा, मेरे चौथी फैक्ट्री में कौन वर्कर है? जुपिटर। आचार्य ये फिर से समझा जुपिटर। दीजिए, समझ नहीं आया, एकदम समझ जुपिटर। नहीं आया आचार्य। हाँ प्लीज नील कुमार समझा जी, दीजिए, वापस थोड़ा समझा। फिर से समझ जी, जरूर, बताइए प्लैनेट को कैसे देखा हमने, एकदम आपने फैक्ट्री बोला समझ कि में आया आपको? फैक्ट्री समझ में हाँ आया? फैक्ट्री, जी जी फैक्ट्री के तो आ अंदर गया। लगी हुई मशीनें समझ में हाँ आई? जी आ गया, ठीक और है, उनको ऑपरेट लेबर करेगी, दैट इज अ प्लैनेट, वो भी दैट आ इज द गया। प्लैनेट। अभी हाँ, मेरा फोर्थ घर देखो आप, जी फोर्थ का फोर्थ फैक्ट्री में कौन सा प्लैनेट है? Jupiter. जुपिटर। तो मेरे फोर्थ फैक्ट्री को कौन चला रहा है? फोर्थ फैक्ट्री की मशीनों को कौन चला रहा है? जुपिटर। Jupiter. जुपिटर। अंडरस्टूड? जी जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। राइट। अभी कितने लोगों को मैं जब सिखा रहा हूं मैं खुश दिखता हूं आपको? How many of you feel my happiness when I am teaching? Do you feel my happiness? Yes? Yeah. अच्छा, स्माइलिंग। फोर्थ फैक्ट्री में एक मशीन होती है हैप्पीनेस की, ठीक है, और जुपिटर वो चला रहे, वो हैप्पीनेस की मशीन चला रहे, राइट? सो अगर मैं कभी सैड हो गया, मुझे क्या करना है? बस उठना है, सिखाना है आप लोगों को, आई विल बी हैप्पी, राइट? बिकॉज जुपिटर इज रनिंग दैट फैक्ट्री। ओके, समझ में आया? हाउ, हाँ सर, हाउ कुड वी डिटरमिन, हम कैसे जज करेंगे कि वो हैप्पीनेस को ऑपरेट कर रहा है? Right. So that entire chart, that entire description, okay, we are going to learn in level 1. Okay. Right now, just understand the concept. Okay. ओके, क्योंकि मैं सब सिखाने लगूंगा तो फिर it will not happen. तो आगे ही नहीं बढ़ेगी गाड़ी, right? Okay. I am making it super simple. मतलब इतना सिंपल कर रहा हूँ कि ये एक वर्कशॉप करने के बाद आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे तो भी चलेगा. ओके, आप जाके फिर YouTube से सीखना चाहोगे तो भी आप सीख पाओगे. ठीक है, कंफ्यूज हो गए नो डाउट, बट स्टिल थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर. ओके, बट अगर मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, देन डेफिनेटली जुड़ जाओ, जुड़ना पड़ेगा सर, राइट? ओके, अच्छा, अनदर क्वेश्चन. ओके, माय 7th हाउस, ओके, 7th हाउस में कौन कौन वर्कर है? स्क्रीन स्क्रीन पे नहीं आ रहा। मार्स और राहु। राहु, मार्स और एक स्क्रीन स्क्रीन पे कुछ और स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। सन है, मार्स है, राहु है।
अभी स्क्रीन सही है, अभी स्क्रीन सही है। Sun, Mars, Rahu. Sun, Rahu, Mars and Rahu. करेक्ट, ये मेरे वर्कर है। ये कौन सी फैक्ट्री चला रहे हैं मेरी? 7th हाउस। अच्छा, अभी एक मेरा सीक्रेट बता रहा हूँ, एकदम गहरा सीक्रेट, किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है? 7th हाउस में सेक्सुअल रिलेशंस देखते हैं, ठीक है? जो जिसने मुझे सेक्सुअल अब्यूज किया था वो मेरे भाई थे, ओके? एंड मार्स इज भाई, ओके? ठीक है? सो इमीडिएटली दिखता है। देखो एस्ट्रोलॉजी कितना सिंपल है, कितना सामने दिखा रहा है आपको। सर सैटर्न कौन है? सैटर्न दोस्त हो सकता है, या कोई केयर टेकर हो सकता है, या फिर कोई लीगल चीज से रिलेटेड कोई हो सकता है, राइट? कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। वकील हो सकता है, जज हो Consultant. सकता है, राइट? बट 7th हाउस में तो मार्स, सन एंड राहु है। करेक्ट, राइट? तो मार्स का इफेक्ट इमीडिएटली दिख रहा है वहां पे, देखो, ठीक है? चलो, एक नंबर है, राशि भी एक नंबर है उधर। ठीक है? सो डू यू अंडरस्टैंड? नहीं सर, ये सेक्सुअल अब्यूज वाला नहीं समझ आया, किसने किया, मतलब किस ग्रह ने? मार्स ने। मार्स ने। हाँ जी। And others, Rahu and Sun, what they indicate. ठीक है, ओके। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। नहीं, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि सबके साथ ऐसे ही होगा, राइट? हर एक की स्टोरी अलग अलग होगी, हर एक की स्टोरी yes, अलग अलग होगी, राइट? लेकिन कुछ इंडिकेशन अपने को दिखेगा, ठीक है? बेसिकली 7th हाउस स्पेसिफिकली इसी चीज को इंडिकेट करता है। नहीं, देयर आर मेनी मशीन्स। देखो, हर एक फैक्ट्री में देयर आर मल्टीपल मशीन्स, नॉट ओनली वन मशीन। देयर आर मल्टीपल मशीन्स इन एवरी फैक्ट्री, ओके? Sir, Rahu and Sun is also there in 7th. Right. What they indicates? Right now irrelevant question, okay? Right now let's not get into that. और राहु आप देखोगे तो मार्स के ज्यादा नजदीक है, सन से थोड़ा दूर है, राइट? सर ओके, आचार्य ये बताइए, आपने मार्स को ही क्यों दोषी माना? उसमें वो मेरी रियलिटी है ना, वो मेरी रियलिटी है ना, मैं रिलेट कर रहा हूँ ना, मेरे चार्ट को मेरी रियलिटी से रिलेट कर रहा हूँ ना मैं। जी जी जी, ओके ओके, ठीक है? नहीं हम भविष्यवाणी भी कर, प्रेडिक्शन भी तो कर सकते हैं क्या? उस ये तो पता होना चाहिए ऐसा, तब हम बोलेंगे, हम प्रेडिक्ट करें कि ऐसा हो सकता है ऐसा। हाँ, वी कैन डेफिनेटली प्रेडिक्ट आल्सो। उधर तो दो और भी तो सर, उधर तो दो और भी राशियां है। राशि नहीं, प्लैनेट्स है। सॉरी, प्लैनेट, सॉरी प्लैनेट। तो उसका आपको संबंध समझना पड़ेगा, उसका युति कैसे होता है समझना पड़ेगा। दैट ऑल वी विल डू इन लेवल 1 2 3, डोंट वरी, ओके? धीरे धीरे, ओके? डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग इन फाउंडेशन कोर्स, राइट? ओके, सो हाउसेस इज फैक्ट्रीज, करेक्ट? फैक्ट्री के अंदर क्या होती है? अलग अलग मशीनें, मल्टीपल मशीन्स। सो एवरी फैक्ट्री हैज मल्टीपल मशीन्स। Who are working on these machines? Workers. Workers means कौन? Planets. Okay, समझ में आया इतना? Okay. अभी if you look at my chart, look at my 10th house. Who is the worker there? Nobody. Moon. नहीं, Moon. How come Moon? मून की राशि है। Okay. So, if there are some houses जहां पे there is no worker, वहां पे मशीन है सर। Okay, that is a good one, right? वहां पे क्या होगा मालूम है? फ्रीलांसिंग होगा। फ्रीलांसिंग कौन करेगा? उस घर का लॉर्ड, स्वामी। फ्रीलांसिंग में कैसे होता है मालूम है ना? खुद ही सब कुछ करने वाला होता है, राइट? तो फ्रीलांसिंग होगा जहां पे कोई प्लैनेट नहीं है, वहां पे फ्रीलांसिंग होगा, मतलब उस घर का लॉर्ड विल डू द वर्क ऑफ दैट हाउस। तो फोर्थ है सर आपके उसमें 10th हाउस, राइट? फोर्थ राशि आ रही है, सो मून। अंडरस्टूड? तो उस घर का काम मून करेगा, ओके? लॉर्ड ऑफ द कुंडली, लॉर्ड ऑफ दैट हाउस।
ठीक है, समझ में आया? Okay, so let me write this also. If no planet in a factory or in a house, then Lord of the house takes over. ठीक है, Lord of the house. Lord of the house, which is we detected from पहले घर से हम जो देखते हैं वही ना लॉर्ड ऑफ द हाउस। जो राशि है वहां पे, उस घर में जो राशि है उसके स्वामी। करेक्ट। अभी से 3 है आपके उसमें, उसके स्वामी। हाँ बराबर। यहाँ आपके 3 है तो 3 के 3 तीसरी राशि है करेक्ट। अभी हमने अपने सालसा राशि के जो गुरु होंगे वही। हाँ, अभी हमने सालसा सिस्टम में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया है। मैंने कहा था कलयुग में एस्ट्रोलॉजी के कुछ रूल्स चेंज हुए। अगर 100% करेक्ट प्रेडिक्शन करना है तो ये थोड़े से नए रूल्स अपने को देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो there is someone called as factory owner. Okay, फैक्ट्री ओनर कौन होगा? घर का लॉर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे राशि नहीं देखनी है आपको, काल पुरुष कुंडली आपको अगर याद होगी तो आपको वो देखना है। सबके लिए सेम रहेगा ये। ठीक है, सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट घर का लॉर्ड मार्स एरीज होगा। राइट, काल पुरुष कुंडली आप याद करो। राइट, फर्स्ट घर का एरीज, सेकंड घर का कौन है? वृषभ, वीनस। विनस विनस विनस। थर्ड घर का मर्क्यूरी। फोर्थ घर का कैंसर। मून और कैंसर। फिफ्थ घर का सन। सिक्स्थ घर का मर्क्यूरी। वेरी गुड। उसके बाद सेवेंथ घर लिब्रा का वीनस। करेक्ट। एट्थ घर का स्कॉर्पियो का मार्स। नाइन्थ घर सैजिटेरियस का जुपिटर। वेरी गुड। 10th घर सैटर्न। वेरी गुड। 11th घर सैटर्न। और 12th घर जुपिटर। वेरी गुड। ओके, गिव योरसेल्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी गुड। राइट, ये क्या हुए? फैक्ट्री ओनर्स हो गए। ओके, दीज आर फैक्ट्री ओनर्स। ओके, ये सबके लिए सेम रहेंगे। फैक्ट्री ओनर्स विल बी द सेम फॉर एवरीवन। दीज आर द फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, एंड अभी ये देखो एम्बियंस इन द फैक्ट्री। अगर एम्बियंस इंटीरियर डिजाइन करोगे तो कोई तो डिजाइनर होगा, बरोबर कि नहीं? अगर आप आपके घर में इंटीरियर डिजाइन करवा लेते हो तो कोई तो इंटीरियर डिजाइनर होगा ना, है ना, जिससे आप करवाते हो। राइट, या फिर डिजाइनर होगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर होगा। राइट, सो फैक्ट्री ओनर is your house lord. ओके, या फिर मैं उल्टा लिखता हूं, एक मिनट। हाउस लॉर्ड इज इक्वल टू फैक्ट्री ओनर एंड राशि लॉर्ड इज इक्वल टू इंटीरियर डिजाइनर। समझ में आया? Okay, abhi, okay, you will understand with examples, don't worry. Okay, don't be confused at all. Okay, it's very simple. Okay, let me share my screen again. Okay, my chart. abhi look at my 10th house. ठीक है, अभी 10th house में there is no worker. Correct, there is no worker. अच्छा, फैक्ट्री ओनर कौन है बताओ? कौन होगा? मून। नहीं, वो इंटीरियर डिजाइनर है।
Saturn. Fact. Correct. You have to go to कालपुरुष कुंडली, क्योंकि वो 10वां घर है ना, तो सैटर्न है, राइट? सैटर्न इज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, राइट? अब ये ओनर ऑफ द फैक्ट्री ने इंटीरियर डिजाइनिंग का किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया? सैटर्न ने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया? मून को। वेरी गुड. अगर ये समझ गए तो गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सैटर्न ने मून को दोबारा समझा दो इसे. राइट, अगर ये समझ गए हो ना तो चैट बॉक्स में लिख दो आई एम अ जीनियस एस्ट्रोलॉजर. राइट? पूरी एस्ट्रोलॉजी में ना दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, अगर ये समझ गए तो प्लीज repeat it once again. Not once again, we'll do it 5 times more. Okay, don't worry. Okay, look at my 12th house. Lagna chart, 12th house. 12th house. Who is the owner of the factory? Capricorn. Jupiter. Pisces. Mercury. Hold on. मैं राशि लॉर्ड नहीं पूछा हूँ. Jupiter is the I am asking house lord. Jupiter. 12th house है, right? 12th जुपिटर का होगा. वो आपको याद है, मैंने वो किया था, राजा रानी को देगा घर, या रानी अपने बच्चों को देगी, राइट? वो याद है आपको? वो वाला आपको याद रखना है. अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिख जाएगा वो वाला इमेज, राइट? तो घर जुपिटर होगा. करेक्ट. फैक्ट्री का मालिक जुपिटर है. आपके हर एक के केस में फैक्ट्री का मालिक विल बी जुपिटर. 12th हाउस फैक्ट्री मालिक विल बी जुपिटर ओनली फॉर एवरी वन ऑफ अस. यस सर. अंडरस्टूड? यस सर. अभी जुपिटर ने इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? मेरे केस में मर्क्यूरी. को. क्या बात है यार. जुपिटर ने मरकरी को दिया. क्या बात है यार. आप लिखो यार उधर चैट बॉक्स में, आई एम अ जीनियस एस्ट्रोलॉजर लिखो, या जीए तो लिख दो, जीए, राइट? जीनियस एस्ट्रोलॉजर. IGA लिख दो, IGA, आई एम अ जीनियस एस्ट्रोलॉजर चैट बॉक्स में. अगर इतना समझ गए हो, दिस इज ऑसम. ओके, आचार्य स्क्रीन से सब कुछ वैनिश हो गया, खाली नाम चढ़ रहे हैं. बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन मेरा? Yes, we can see. ओके. दीपांश UGT क्या लिख दिया यार? IGA बोला. टीचर. You're a genius teacher. अच्छा है. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ठीक है, we'll do one more practice. Okay, one more practice we will do. Okay, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं हम. ठीक है. My 7th house. ठीक है. Who is the factory owner of my 7th house? Venus. Mars. Factory owner, house owner. Aries, Mars. Not Rashi. No. Jupiter. Venus. हम सब लोगों का, ओके, हम सब लोगों का 7th हाउस ओनर विल बी Venus only. Venus. ओके. अपना फैक्ट्री ओनर इज Venus, राइट? 7th हाउस. समझ में आया किसी को? एनी डाउट्स? एनीबॉडी इन दिस वन? जो मार्स चिल्ला रहे थे, जुपिटर चिल्ला रहे थे, एनी डाउट? नो डाउट. ओके. 7th हाउस ऑलवेज Venus. ओके. अच्छा, वीनस ने इंटीरियर डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट, राशि का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? मार्स को दे दिया. करेक्ट. वेरी गुड. और वीनस और मार्स ने मिलकर इन लोगों को एम्प्लॉय बना लिया. वर्कर किन लोगों को ले लिया वहां पे? राहु, सन एंड मार्स. Excellent, amazing, super awesome. Okay, genius you guys are. समझ में आया? तो एक बार और रिपीट कर दें प्लीज सर. और 2 बार करेंगे. ठीक है. चार्ट नहीं दिख रहा जी. थैंक यू सर. Okay, so now look at my 5th house. Look at my 5th house.
फिफ्थ हाउस का मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ फिफ्थ हाउस? King. King. किंग, करेक्ट, सन, राइट, Sun. Yes, king. राइट. सो फिफ्थ हाउस सन. सन ने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? इंटीरियर डिजाइनिंग का सैटर्न को. क्या बात है, वेरी गुड. ओके, इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू सैटर्न. अंडरस्टूड? यस सर. ओके. एंड सन और सैटर्न ने मिलके किसको एम्प्लॉय रखा? वर्कर किसको बना लिया? Queen को. क्वीन को, मून को, राइट. वेरी गुड, अमेजिंग. ओके, we will do one more. Okay, final one. Look at my third house. Yes sir. Who is the owner of the third factory? Mercury. Mercury is the owner of the factory. Mercury ने इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? मेरे केस में Jupiter को. वेरी गुड. और मर्क्यूरी और जुपिटर ने मिलके किसको वर्कर रखा हुआ है? नेपच्यून. अमेजिंग. समझ में आया सबको? Yes. Yes sir. वेरी गुड, सुपर ना. 30% तो एस्ट्रोलॉजी सीख गए आप लोग. राइट. अभी हम लेवल 1 में क्या सीखेंगे मालूम है? मैंने मेरे दुश्मन को अगर इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो मेरा मूड तो खराब होगा ना भाई. पैसा लूट के चला जाएगा. है कि नहीं? उसका भी मूड खराब हो जाएगा. करेगा. उसका भी मूड खराब हो जाएगा. यस और नो? राइट. मतलब यार कौन सी नौबत आ गई यार, क्या करना पड़ रहा है यार. तो वैसे भी वो घर थोड़ा सा, ये माहौल खराब हो गया. ऊपर से वर्कर मैंने ऐसा ले लिया जो किसी को भी पसंद नहीं, ना मेरे को पसंद है, ना मेरे इंटीरियर डिजाइनर को पसंद है. ऐसा वर्कर आ गया तो और भी बर्बाद हो गया वो घर. यस और नो? Yes. वो मतलब वो वर्कर भी एकदम ऊब जाएगा. वर्कर क्या करेगा? मशीन ऐसी चलाएगा कि उल्टी गंगा बहाएगा. यस और नो? राइट. Yes sir. दिस इज एस्ट्रोलॉजी. यही तो हमें करना है. अंडरस्टूड? अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो लेवल 1 विल बी सुपर सिंपल. ओके. और ऐसे ऐसे माय गारंटी टू यू गाइज, minimum 60% accurate predictions you will start even after level 1. How many of you would like that? Would you like that? 60% is good, no? Yes sir. Yes. So good. ठीक है. अभी आपके असाइनमेंट में और एक चीज ऐड कर लो, मैं बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख दूंगा. वो तो 3 स्टेटमेंट्स आप मुझे भेजोगे. आपका सोशल लाइफ वाला, पर्सनल लाइफ वाला और सोल लाइफ वाला, वो आप भेजोगे मुझे. करेक्ट. आपके चार्ट में कोई भी एक घर चूज कर लेना, कोई भी, एंड टेल मी कि उसका फैक्ट्री ओनर कौन है, उसका इंटीरियर डिजाइनर कौन है और उसमें वर्कर्स कौन. ठीक है? समझ में आया? दिस इज एडिशन टू दैट असाइनमेंट व्हिच आई हैव गिवन यू. Yes sir. Okay. So if you have understood so far, just type in U in the chat box. If you have understood so far, type in U in the chat box. Okay. Now we'll go to the final section for today. और वो थोड़ा इतना टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा on a more on a क्या बोलते हैं, philosophical side. ठीक है, थोड़ा देखेंगे हम. Amazing, Vimal, thank you so much. I like it that you are liking it. Okay. तो आज हमने अभी तक क्या देखा? सोशल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, पर्सनल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, अपने खुद के साथ सोल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, हमने ये देखा. और ये चार्ट सिस्टम है क्या, कैसे देखना है, कैसे समझना है. राइट. फैक्ट्री है, राशि है, राशि का मालिक है, इंटीरियर डिजाइनर है, फैक्ट्री का मालिक है. राइट. All of these things. Okay. Okay. Now, final section for today. Okay. I want to
talk to you about some ethics that as an astrologer we should be following. Right? This is final section for today, and then we'll go tomorrow. Tomorrow will be another exciting day. Okay, similar things I'll be sharing tomorrow also. Okay? कल तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ आपके लाइफ में कहाँ पे आप कर रहे हो. Okay, you will understand. Okay, without you knowing, आप aware हो जाओगे कल. Okay. So let's look at this. ठीक है. So ethic number 1. Okay, let me share my screen. Abhi, whatever experiences I had in my life regarding astrologers and regarding the predictions that they gave me and all of that, lot of charts I have read myself, lot of consultations I have done myself. And so वहां से ये सब ethics बन के आ गए. Right. So ethic number 1. Okay. सबसे पहले we have to start working on our own life. How many of you agree? Yes or no? Yes. Yes. This is ethic number 1. Yes. मतलब मैं तो बोलूं, if you study your own chart 10 times, then you get the right to study one person's chart. Someone else. Right? This is ethic number 1. Okay. Ethic number 2. ये मैं काफी बार बोलता हूँ, डोंट ट्राई टू बी अ हीरो. ठीक है. मतलब बेसिकली क्या, कोई आपके पास आया है कंसल्टेशन के लिए, सीधा मुंह फाड़ बोलना चालू मत करो. आपके लाइफ में ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, आपका ये वक्री है, वो राइट, चांडाल दोष है, ये दोष है, वो दोष है, काल सर्प योग है, एंड दिस एंड दैट. उसको यार डरा के वो सुसाइड कर लेगा बेचारा. राइट. Don't try to be a hero. Stay grounded. और जो भी आप बात करोगे ना, सामने वाले से टैली कर लो यार, लाइफ में हुआ है क्या ऐसा, नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना यार, ठीक है ना. Right? Has this happened to you in reality? Always make sure you are relating with your reality. मेरी reality अलग है, धनंजय जी की reality will be completely different. समझ लो मेरे 7th हाउस में मार्स है, धनंजय जी के भी 7th हाउस में मार्स है. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लाइफ में 7th हाउस में मार्स का इफेक्ट भी सेम ही रहेगा, धनंजय की जी के भी लाइफ में मार्स का सेम ही इफेक्ट रहेगा. ऐसा जरूरी नहीं है. राइट. वी हैव टू टॉक टू द पर्सन, वी हैव टू लुक एट द रियलिटी. ओके. ऑलवेज टैली विथ योर रियलिटी. ओके. थर्ड, रिमेंबर ऑलवेज, quality, quantity, intensity and intention is in your hands. ये हमने day 1 पे भी देखा था. Right? किसी को भी कभी भी मत बोलना यार तेरे लाइफ में पैसा ही नहीं है. वो उल्टा प्रूव करने को आ जाएगा 2-3 साल बाद, देखो सर मैंने इतना बना लिया. Right? क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंसिटी एंड इंटेंशन इज इन योर हैंड्स. अपने हाथ में है वो. राइट. भगवान ने अपने हाथ में दिया हुआ है. ओके. 4, वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर रीड चार्ट्स बिहाइंड एनीवन्स बैक. ठीक है. किसी के पीठ के पीछे, वो भले आपका बेटा होगा, कितना भी छोटा होगा, कितना भी बड़ा होगा, सोल का कोई उम्र नहीं होता है, एनर्जीज का कोई उम्र नहीं होता है. ओके. देयर इज नो एज फॉर एनर्जीज, देयर इज नो एज ऑफ द सोल. राइट. नेवर रीड चार्ट्स behind anybody's back without their permission. Don't read, because you will attract a lot of negative karma. Okay, even for study purposes. That's why I asked you, take permission. If you are going to study someone's chart, take permission. Right? Even if it is a small child, small toddler भी अगर है,
राइट, उसके साथ बैठो, खेलते खेलते उसको पूछ लो, राइट, गेट अ फीलिंग, गेट अ वाइब, ओके, गेट अ परमिशन फ्रॉम देयर सोल, ओके। और अगर एडल्ट है तो डेफिनेटली उनको पूछ के लेना दैट आई एम रीडिंग योर चार्ट, आर यू ओके विथ इट? इफ दे आर नॉट ओके, डोंट रीड, राइट? हाँ धनंजय जी, प्रैक्टिस के लिए हम अब्दुल कलाम जी, यशवंतराव देखो, इफ समवन चौहान, इज डेड, नरेंद्र मोदी का भी देखो मैंने एक मिनट, होल्ड ऑन, समझ गया मैं आपका सवाल, राइट? इफ समवन इज डेड, उनका भी चार्ट आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हो, बैठो, ask for their soul's permission. Okay. Yeah, got it. Immediately you will get a yes or no in your head. Whatever you get, you believe in that. Okay. Thank you, Okay? sir. Thank you. If someone is alive, नरेंद्र मोदी भी है, for example, नरेंद्र मोदी का अगर परमिशन नहीं है तो मत पढ़ो, ठीक है? फिर आप बोलोगे सर फिर कैसे देखेंगे चार्ट्स, राइट? सो इसलिए आपको मेरे साथ जुड़ना बहुत जरूरी, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ पीपल हु हैव गिवन अस परमिशन। आप उनको कभी भी मैसेज कर सकते हो, आप उनको कभी भी बात कर सकते हो, उनको कभी भी आप बोल सकते हो सर कैन वी शेड्यूल अ कॉल, मुझे ये चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, चेक करनी है इन योर चार्ट, राइट? सो वी आर बिल्डिंग अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ इट, राइट? So never read any chart behind anyone's back, okay? Because you will attract all the negative. Deepash, thank you so much. Okay. I think the next, next some rules will apply there, okay? This one will apply there, okay? Never do free readings. Okay? Don't read anybody's chart for free. Always charge. Okay? Why? क्योंकि वो कर्मा जो अकाउंट है ना, वो उधर ही क्लोज कर दो, डोंट कीप इट ओपन, राइट? I get a lot of requests, sir, check this, predict this, please, sir, do this, sir, please do this, right? Sometimes I have to ignore those messages, okay? I'm very sorry for that, right? Or, if you ask me, I will be seldom looking into predictions also, right? Definitely charge कर लेंगे दीपांश, okay? Right? So always आप लोगों को भी, if you are doing any reading, okay, level 3 के बाद मैं खुद permission देने वाला हूँ आपको, there will be a golden certificate, I am going to give you a permission, go ahead and you can start doing readings. In fact मैं खुद market भी करूँगा आपके लिए, right? I'll give you clients, right? So you can start earning also. But Sudhir ji, how to say no to people, who approach you, because when they get to know that you are into this, मेरा देख दो, please ma'am मुझे बता दो, तो I find it very difficult to say no. If it's someone very close to you, you don't want to take money, उनसे कुछ काम करवा लो. Okay. Right? For example, it's a child of yours, right? He's very excited about the reading. Get some work done. Right, पाव दबा लो, right? पाव दबा लो, correct? There has to be some energy exchange, okay? Got it. Yeah. Because understand this, even you do not own your children. You have just given them birth, but you don't own your children. They have their own life. They have their own journeys, right? Okay. So, अगर कोई close है तो कुछ काम करवा लो, definitely, right? Okay. Don't do anything for free. Okay. 6th, do not become a barrier in someone's karma or prarabdha. मतलब हीरो बनने के चक्कर में ऐसा कोई रेमेडी मत दे देना कि आप बाधा बन गए. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ सम पर्सन इज सपोज टू गो थ्रू अ चैलेंज, राइट, ही इज सपोज टू गो थ्रू दैट चैलेंज, नो? Who are you to stop him from going through that challenge? Because that challenge is going to make that person bigger, right? That challenge is, in fact, you know what?
if I am looking at some remedy, किसी को remedy देना है, 8 out of 10 cases I will tell there is no remedy. Remedies hai, but I don't want to give you because you are supposed to go through this. Right? You are supposed to become uncomfortable there. So do not become a barrier. Right? Don't come in between. या फिर वो सब कर्मा आपके पास आ जाएगा. So, but people do come up with some problems. I mean, basically, they all come up with the problems. Guide and they them. want a solution to it. Guide them. Okay? Guide them. Give them the right direction. Right? लेकिन बगैर सोचे समझे मत बोल देना जाओ मछली को खाना खिला कर आओ. Right? Don't do that. Right? Okay, sir. That is very wrong. Okay? लेकिन sir, there are hundreds of things you need to check for a remedy to work. Not one or two things. सिर्फ लग्न कुंडली देख के नहीं होगा. You have to look at Langla Kundli. You have to look at divisional charts. You have to look at moon Kundli. You have to look at sun Kundli also. You have to look at dashas. You have to look at transits. Right? You have to look at all of these things and then check whether doing one remedy, what is the effect going to be in other areas of his life. You have to make a person completely aware. It's not easy. Okay? Remedy, astrological remedies are not easy and they are not supposed to be given just like that. और YouTube वीडियो से देख के तो रेमेडीज बिल्कुल भी मत करना. राहु को स्ट्रॉन्ग करना है वो पीकॉक के पत्ते घुमा लो. Don't do it. Okay, unless and until you have understood yourself completely, unless and until you have understood your charts completely, your past completely, your present completely, your patterns completely, don't do it. Okay. Okay. 7th. Understand your role. अगर आप consultant हो या astrologer हो, right? Understand your role in that person's life. You need not be a guru in all cases. Okay? For example, आप में से कुछ लोगों को आपका जुपिटर का पोजीशन ऐसा होगा. If you come to level 1, I will tell you, don't call me a guru at all. Make me a friend. Okay? Because me being a guru for you might not be beneficial for you, but me being a friend for you might be very beneficial for you. Okay? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर बन गए तो सबके गुरु बन गए आप. ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हर एक का चार्ट डिफरेंट है और हर एक के चार्ट में गुरु का पोजीशन इज डिफरेंट. Okay? So don't try to be a guru everywhere. Yes, in many cases you will be a guru. But in some cases, you are supposed to be a friend for someone. In some cases, you are supposed to be, a brother for someone. Right? So remember this also. Okay? सर जी. Yes, Dhananjay ji? कभी कभी क्या होता है, अभी मेरे पास कारपोरेटर्स वगैरह आते हैं लोग, उनका काम हो जाता है, बाद में कुछ आम की पेटी लाओ, मिठाई लाओ, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? गिफ्ट लाते हैं. ले लो ना. वो चलता है. अगर फीस ले रहे हो तो डिसाइड कर लो पहले से ही, इतनी फीस इतनी आम की पेटियां. ठीक है? नहीं फीस भी लेता, वो बाद में उनका काम हो जाने के बाद वो गिफ्ट देते हैं. वो लेना चाहिए नहीं? डेफिनेटली लो, क्यों नहीं. राइट? यूनिवर्स दे रहा है आपको, हम ना क्यों करें. ओके. ठीक है. हाँ, अगर वो देखकर आपको बोल रहे कुछ गलत काम करो, हाँ, इंटेंशन गलत करो, बराबर, फिर वो नहीं लेना चाहिए. This is my favorite. Okay? You do not gossip. Lot of astrologers do this. Do not gossip about one client to anybody. Okay? A lot of astrologers do this. Right? अरे ये ऐसा हुआ था, इसलिए मैं भी आपको मेरा ही चार्ट दिखा रहा हूँ. I am not showing any of my students' chart or not any of my clients' charts to you. I am showing you my chart only. Work ethics. Right? Do not gossip. It is spiritually also unethical to gossip. Right? 9.
Ninth, always strive to connect astrology with scientific facts, astronomical facts, logical facts, right? मतलब कभी कभी एस्ट्रोलॉजी कैन बिकम सो ओवरवेलमिंग, आप बहकावे में आ सकते हो, है ना? मतलब बहुत बार क्या होता है, लोग बहुत बार क्या करते हैं मालूम है, चार्ट के हिसाब से अपना रियलिटी बना लेते हैं। अपने को वैसे नहीं करना है, अपने रियलिटी को देखना है और फिर चार्ट से क्रॉस चेक करना है ना? राइट, सो दीज आर द 9 वर्क एथिक्स। उसका मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, राइट? तो वो वीडियो देखना, उसके नीचे कमेंट भी करना, राइट? सो थोड़ा सा यूट्यूब में भी आगे बढ़ेगा। सो कांग्रेचुलेशंस। कर दिया। हाँ अनिल कपूर जी, आचार्य आपने 7वां नंबर मिस कर दिया। 7वां नंबर मिस कर दिया। आप 6 के बाद सीधे 8वें और 9वें नंबर पे आ गए। नहीं अंडू दिखाया ना 7वां जी, अनिल कुमार जी दिखाया मैंने 7वां। अपना रोल आपको चूज करना है दूसरे के लाइफ में, आप हर एक के लिए गुरु नहीं बन सकते हो, मैंने बताया था, है ना? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज आपने डे 2 भी कंप्लीट कर लिया है। ओके ओके, सो कैसे लगा डे 2? कैसे लगा आपको? प्लीज लेट मी नो। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग सर, एक्सीलेंट, मजा आ गया। कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी आपको, वो भी बताओ। मैं कहना चाहती हूँ कुछ। यस अंशु जी। See, I am from education industry. It's been more than, you can say, 22, 23 years. Then I started. एक मिनट राजेश जी, हाँ go ahead. So following the traditional method, हम सब ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़े हैं, बट जैसे जैसे मैं अपने को अपग्रेड करते गई, न्यू टीचिंग मेथड्स आते गए, सो प्लेवे मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड kids. So I can relate your teaching method to that playway method only, because you stoop to that level, you know, you stoop to that level. आप अपने students के level पे जाके बात को समझाते हैं. I have done astrology course before also, as I told you, but that was very, you know, बिल्कुल ज्योतिष वाली ही बातें होती थी। यहाँ पे प्रोफेशनल हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम किंडरगार्टन में हूँ, और आप उस तरह के सिंपल वर्ड्स लेके एंड सिंपल आपका जो मेथड है उस तरह से आप हमको समझा रहे हैं। मुझे सच में बताऊं तो मुझे लग रहा था कि these 5 days आप मुझे यही तो बताएंगे, क्या हाउसेस है, क्या प्लान है। Correct. Talk about that only, because initially everybody talks about that, but the way you are teaching that, it's a, you know, like Rashi जो है वो interior designer है and the house is a factory. That is amazing. Thank you so much Anshu ji. Thank you so much. Thank you. I absolutely agree with you. Yes Dipansh. Sir, I absolutely agree with her. I have been a trainer myself, और आपका जो तरीका है सिखाने का वो दिमाग में गड़ जाता है। मतलब आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ती, you know, चीजें याद रखने के लिए। You're so good. Awesome job, sir. Thank you. Thank you Dipansh. Thank you so much. All right. हेलो, फैक्ट्री वाला आइडिया अच्छा है सर आपका। अच्छा है ना? एकदम अच्छा है। वो बोलते हैं ना, मेमोरी में घुस जाता, फोटो जैसा घुस गया वो। करेक्ट, फोटोग्राफी मेमोरी बोलते हैं ना, वैसा वो घुस गया। हेलो सर। यस अमरनाथ जी। सर प्रामाणिकता से कहूँ, आप फोटो में मेरे जैसे सिखाते हैं, जस्ट लाइक विवेकानंद। क्या बात कर रहे हो? अरे बाप रे। नो ट्रूली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैं 35 साल पहले एस्ट्रोलॉजी सीखा था। अच्छा। उसके बाद में मैं न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशन करता हूँ। ओके। बट आपका जो स्माइली है वो मे भी आपका 15 डेट है, शुक्र का प्रभाव है, लेकिन आपका यानी बहुत ही बढ़िया स्माइली के साथ और इजी सिखाते हैं। यानी जो असामान्य है व्यक्ति, उसको भी समझ में आएगा, वो भी ज्योतिषी बन सकता है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा लाइफ टाइम। Thank you so much. Thank you Amarnath ji. अच्छा, officially the class is over, so those who want to leave can leave. 15 minutes I am still here. Firstly, Venus ascendant हो भाई, spouse हो, तो तारीफें सुनने को तो बहुत अच्छी लगेंगी, right? And secondly, किसी की अगर कोई doubts है, questions है, so you can ask, right? So, or those who want to leave, you can leave also. Again, by 10:30 I will upload the recording also, right? So day 1 की भी recording रहेगी, day 2 की भी recording होगी, so you can watch this again before we meet again tomorrow. Okay सर
Yes, Dhananjay ji. मेरा कर्क लग्न है और कर्क राशि है ठीक है. और उसमें मून बैठा है बुध के साथ. डिग्री वाइज तो दूर दूर है, बुध अस्त है. क्या करना पड़ेगा मुझे? प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो देखो ना पहले लाइफ में. प्रैक्टिकली रिलेट करो उसको. प्रैक्टिकली रिलेट करो ना. ओके. राइट, प्रैक्टिकली रिलेट करो. हम्म. फॉर एग्जाम्पल मून इज मदर. या राइट, तो मदर के साथ कैसा रहा सब कुछ, उसके Okay. साथ चैलेंज हुआ नहीं हुआ. हम्म. मून इज ऑल्सो योर माइंड. या Right, so think about that also. What has been the challenge with your mind? Has there been any challenge there? Right, Jupiter is guru. या Right, so is there any guru in your life? उनके साथ में relations कैसे रहे? So relate with reality first. Okay. Then come to your chart. Okay. Okay, फिर सब देखना debilitated, malefic, वो सब बाद में देखना. पहले reality देखो. Thank you. Thank you, Mishti. Thank you for that comment in the chat box. Thank you so much, sir. Thank you and God bless you. Most welcome. Good night, sir. Good night. And good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Anybody else? Anything you want to talk? सर अमरनाथ बोल रहा हूँ. हाँ अमरनाथ जी. सर ये पर्सनल लाइफ बिहेवियर में मेरा मून आ रहा है और बिहेवियर विद सेल्फ में सन आ रहा है. ओके, तो उसको कैसे करने का? अच्छा, तो सिंपल है ना. पर्सनल लाइफ में रानी हो. हाँ, तो ऑर्डर छोड़ो फैमिली के ऊपर. है ना. अरे बाप रे, कितना मन से हंस रहे एकदम. नहीं सर, बिकॉज माई लाइफ इज दैट वे ओनली. मेरा लाइफ ही ऐसा है सर. है ना ऐसा. ओके, वेरी गुड. और ये सन का सर, सन का खुद को राजा की तरह ट्रीट करो. अच्छा, ओके. थैंक यू वेरी मच सर. वैसा जीवन जी रहा हूँ. आप तो हो ही रहे हो, रॉयल्टी हो आप. परफेक्टली सर, थैंक यू वेरी मच. और इसमें क्या है, असेंडेंट में क्या है, सोशल लाइफ में क्या है? असेंडेंट में प्रिंस है, आपने बताया ना. देखा ना, पूरा रॉयल्टी बन गया यार. राजा, रानी और युवराज सब साथ में. क्या बात है, व्हाट अ लाइफ. सर वैसा ही जी रहा हूँ सर मैं. एंजॉय करो, एंजॉय करो. धन्यवाद. आभारी सर. वेरी गुड. Hello. Yes. Sir, Sudhir ji, yeah. Actually, I have been doing astrology for more than a year, but I still don't call myself an astrologer because I didn't have that confidence कि मैं predictions कर सकती हूँ. I had the knowledge, but nothing further really. Right. So I really feel that once I've, you have an amazing way of explaining things, even though you know, but there's a different take to things. So I feel that yes, I think I can understand. Probably start reading my chart first. Right. Which has been more than a year, and I completely just blankly look at my chart. I have seen umpteen number of videos, but nahi ho raha. And I really feel that yes, I think if I continue to do this, and I can really understand because I'm getting a direction from you. So thank you so much for that. Most welcome. Thank you so much. And as I had mentioned yesterday, I'm going through a very, 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 very bad challenge in my life. I think the worst in my life. And I think I'd also mentioned and give you your little audio, this thing, Right. So if I can just sometime, anytime, just, ask you just one thing I wanted to ask you. I think probably going to a major legal issue. Right. And I'm really, really stressed because I'm a single mother. So I'm a little stressed about what's happening in my life. Right. So if I can sometime, if you could give me a little time, whenever. Sure. We can talk on the personal WhatsApp. Yeah, whenever. One thing you can check out. What are you in? So whatever the issue you are facing. Yes. First decide, is it a social issue or a personal issue? Okay. For you, okay. Who are the people involved? Are they personal people who are involved or are they social people? Social, I think it was a fraud. It was a fraud committed with. Correct. It's a social thing, right? Yes. Okay. Now, what is your ascendant in your social? Mercury. Prince? Yes. Be super diplomatic. Okay. Don't straight away challenge anybody. Okay. Try diplomacy first. Okay. Right? That is my immediate answer to you.
ओके अब वो हाथ से निकल गया, वो चीज गड़बड़ हो चुकी है ऑलरेडी। कौन सी? ये ठीक जो है। डिप्लोमेटिक अच्छा, वो you- चांस खत्म हो गया। No, nothing like that. No, you can always take that chance back. The guy has disappeared after I confronted. Acha. भाग गया। Okay. So if you find that guy, Yes. so do whatever it takes to find the guy. Okay. If you find that guy, don't immediately go and start, blasting him. Right. Try diplomacy first. Okay. And then if diplomacy fails, then go ahead and do, whatever would be necessary to be done. Okay? Okay. Okay. Got it. That is my immediate response to you. That makes a lot of sense. I wish I had spoken to you before I went and made a blunder. Yes. Okay. So I क्या आपने should- उसको भगा दिया? नहीं, वो मुझे लगता है actually वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, he's done it with a lot of people and I think he has just gone underground. Of course the मेरे साथ जो पैसा है which is major. Right. So Correct. मेरे कभी जाने कभी के- क्या होता है in these cases, कभी कभी people get threatened. Yes. And then they feel that their survival is kind of threatened, and then they just run away, right? And then we cannot do anything about it, or Yeah. it takes a lot of time. Yeah, so that's where I've got stuck. Right. So instead of that, you could have taken it very diplomatically. I could have. I made a mistake. It was just 2 months back and I made that mistake. No worries. Okay. Whatever. Life teaches. Yeah, but now Be that comfortable my, with uncomfortable. What to do? अब जो मेरा शनि है, it's coming to my 6th house in transit on tomorrow. So that is my legal house. Correct. So I'm trying to understand because I'm really wanting, I mean, I have no option but to go. See, legal only side. Shani coming in transit is very incomplete information. It's also a Sadesati going, it's coming on the moon. Right. Again, that is also incomplete information. We need to look at dashas also. We need to look at some nakshatras. What is Ketu happening Dasha there. chal rahi hai, which is very bad. My Now Ketu we need to Dasha check where is Ketu, where is Antardasha. Lot Ketu of is things we on need to in check. my ascendant. I understand. A lot of things we need to check. So immediately don't train your mind कि हे भगवान शनि आ रहा है 6th house में, मतलब मेरी तो बच गई. Nothing like that. Okay. हो सकता है the situation might be so that Shani might end up helping you. Yeah. Right. Even though it is Sadesati ka Even though, right? Even though it is Sadesati, right? Because Sadesati also is different for different people. Yes. I know, but it's been very bad for me. Probably because Ketu Dasha bhi aa gayi, saath mein everything. I don't know. I really don't know. I'm really confused. So take things diplomatically. Henceforth also, social life. Okay. Diplomacy will be the best for you. I think that's the reason my life has been with so much of problems because I've never been diplomatic. And I think I should have been diplomatic and I don't know the D of diplomacy. Acha, what are you in your moon ascendant? Moon is Saturn. And your soul? Sun. Ha, see? So what you're doing is your soul behavior, you're trying to apply in your social life. With the social, that's where the problem is. That is where the problem happens. Okay. Right? ऐसे आप राजा की तरह behave करने जाते हो, and then things don't work out, whereas you're supposed to behave like a diplomat. Yes, diplomat, absolutely. Prince is a diplomat. Prince किसी को दुश्मन नहीं बनाएगा. क्यों मालूम है? उसको मालूम है आगे जाके मुझे वोट्स चाहिए so that मैं राजा बन सकूं. अगर मैं आज दुश्मनी कर लूं, तो मुझे बाद में कोई वोट नहीं देगा, मैं राजा नहीं बनूंगा फिर. Right. Prince always has that long vision, no? कि मुझे 20 साल बाद मैं राजा बनूंगा. Yes. So 20 years का वो vision रख के he has to work today. Yes. So you have to That's the blunder that I have made. Right. And now I need to undo it. Now again, even right now also, start thinking like a prince. What would a prince do in such a case? Okay. Start thinking like that. Let's see if you can come up with something by tomorrow. Let's see. Okay. Hello, sir. Yes. Thank you. Okay. Yes, Anvi. Yes. Sir, like mother is moon. तो सर हम ये जो हम लोग whatever we work वो किस planet से देखते हैं हम? Whatever we work. We work जो हमारा काम होता है, हमारी work place होती है, उसको हम देखो, which planet will नहीं, donate? देखो, workplace is a result. Okay. मतलब वो मशीन हो गई, फैक्ट्री की मशीन. Okay. मतलब आप कौन सा हाउस देखोगे? 10th हाउस देखोगे.
10th. वेरी गुड, आपको भी आ गया, क्या बात है। हाँ, Amazing, no, you right? teach really well. You अभी teach really 10th हाउस nice. में वर्कर लोग कौन कौन आ गए देख लो। खाली है मेरा तो। खाली है, okay, no worries. So when you come to level 1, level 2, we'll learn about aspects also. हाँ, right. Right? बट वैसे कौन सा प्लेनेट, मदर का मून हो गया, फादर का सन, गुरु जैसे जुपिटर हो गया, तो फिर हम इसको वर्क जो हम काम करते हैं, आर वर्क हम विल बी सैटर्न ओनली। नहीं, उसको वर्क अगर आप बोलोगे ना, इट इज अ वेरी इनएनिमेट थिंग, नो, सो यू विल नॉट रिलेट इट विद एनी प्लैनेट। अच्छा, हमारा वर्क क्योंकि कैसे है, वीनस भी काम करता है, जुपिटर भी काम करता है, अच्छा, सैटर्न भी काम करता है। वीनस अपनी तरीके से काम करता है, जुपिटर अपनी तरीके से काम करता है। यस और नो? अगर हमें आपने अपने लाइक यू सेड ना कि मदर के साथ रिलेशन देखो कुछ हुआ या के साथ, तो इसमें अगर जैसे हमें वर्क से कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं तो हम कौन से प्लेनेट को देखेंगे, उस एंगल से आई वाज आस्किंग। आप प्लैनेट वर्क के रिलेटेड इश्यूज अगर हो रहे हैं तो आप वो हाउस को देखेंगे। ओके, वो फैक्ट्री का, हाँ, फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे आप, ठीक है। तो फैक्ट्री कौन चला रहा है, फैक्ट्री का मालिक कौन है, फैक्ट्री का इंटीरियर डिजाइनर कौन है, ये सबसे पहले तो ये देख लो आप। वो मंगल एंड सैटर्न का फिर आ रहा थिंग, ये इश्यू। करेक्ट, मंगल और सैटर्न। अभी मंगल और सैटर्न का आपस में रिश्ता कैसा अपने को वो देखना पड़ेगा। हाँ, मेरे में तो वो इकट्ठे ही बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, तो वो इकट्ठा बैठे हैं, तो दैट वे। सर आई ठीक है, वांट टू अब आप इमीडिएटली इतना सब कंक्लूजन मत ले लेना, ठीक है। तो हमें मंगल और सैटर्न का कैसा रिश्ता होता है वो देखना पड़ेगा, फिर किस किस का एस्पेक्ट आ रहा है वो सब देखना पड़ेगा, राइट। ओके, मालूम पड़ेगा, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, ठीक है। I want Sir, to I ask want one to thing. ask about the courses. Courses, about courses, tomorrow half an hour I'll tell you about entire all the 6 levels. I'll tell you the And, fee structure and the pricing plans and all of that I will tell you. How much time, sir? Right, and within 3 to 4 months all 6 levels we will complete. दुकान खोलनी है सर, कितनी देर में खुलेगी? And within 45 days you can start practicing also, right, as a 45 days, right, as a क्या बोलते हैं, professional astrologer you can start practicing within 45 days. 45 days, right, और उसके आगे you will become an even better astrologer if you complete till level 6, ठीक है। और अगर अपना अच्छा से जमता है, अपना युति अगर अच्छे से जमता है, तो आई विल ओनली प्रमोट यू, ओके, आई विल ओनली गिव यू क्लाइंट्स, आई विल ओनली वर्क विथ यू, राइट। आपने कहा था उसमें कि आपका वो चार्ट है जो उससे ज्योतिष का है, मतलब संभावना है। हाँ हाँ, तो उस वजह से अगर मैंने कहा है तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। हाँ जी। सर मुझे यस रवि। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने आप से वो सर्वेंट की तरह कैसे बिहेव करते हैं, यानी मतलब वो सोल वाला जो ये लिखा, आई वांट टू सॉल्व माई सेल्फ चैलेंजेस एज अ माइन इज दैट सैटर्न, तो सैटर्न मीन सर्वेंट। करेक्ट, इन योर पर्सनल लाइफ। यस सर, नहीं इन माई सेल्फ दैट विद योर सोल, राइट, विद योर सोल, ओके। सो मतलब खुद की सेवा करनी है आपको, सिंपल, ओके, खुद की सेवा करनी है आपको। दैट मीन्स व्हाट, नेवर निग्लेक्ट योरसेल्फ, नेवर इग्नोर योरसेल्फ, ठीक है। इफ यू आर फेसिंग सम से बॉडी एक, डोंट इग्नोर इट, खुद की सेवा करो, ओके। गो अहेड एंड हैव अ मसाज फॉर योरसेल्फ, राइट। और इफ कोई चीज आपको बहुत तकलीफ दे रही है, अंदर से खाई जा रही है, राइट, सो खुद की सेवा करो, डोंट इग्नोर योरसेल्फ, राइट। ओके सर, remember that always. Okay, I got it. Thank you, sir. Do you ignore yourself? Sir, partially. Partially ना, तो ठीक है, उसको partially भी हटा दो, 100% take care of yourself fully. Yes sir, thank you sir. खुद की सेवा करो, okay? Okay sir, thank you so much. Yes, Anshu ji. Sudhir ji, if somebody has Venus in as a soul and Venus also in personal life, Very good. and Saturn as ascendant, अच्छा, कैसे कहेंगे हम इसको? हाँ, मतलब लोगों के सामने तो सेवा करनी पड़ेगी, घर पे आके नखरे दिखाओ। वो इंसान नहीं कर सकता लोगों के आगे, तो वो सन है, किंग है।
तो कैसे गाइड कर सकते हैं? Right. देखो, see, in social life he's Saturn, no? Right. So he has to be a sevak. Okay. Right. He has to do work which is service oriented. He has to, or whatever work he is doing, the attitude has to be very service oriented. The attitude has to be very, other people oriented and all. Okay. Okay. And when he or she, whoever it is, when they come home, they can start showing their jalwas and nakras, and that's okay. Right. And घर वालों को झेलना पड़ेगा. Right. Okay. That is how it is. And with soul? Soul also the same, no? So that person should treat himself like a, spouse, and lot of luxuries basically, right? Venus, no, how Venus is rich, luxurious things, right? So they might buy a lot of luxurious things for themselves, or they want to buy. They might have that, thing. And the family has to support. For that he has to have resources also, no? Right. For that he has to have resources. Then only he can. Then only. और शायद sources बन नहीं रहे होंगे because he is not behaving in a very caring way outside. Okay. That can also come in between, right? Okay, guys. Final question, then we'll close for the day. Vinod ji, go ahead. So much. Thank you. Most welcome, Anshu. तो मेरा जो सोल में है, यानी सन लॉर्ड जो है, सन लॉर्ड, हाँ आई थिंक सन लॉर्ड मर्करी है. Okay. तो डिप्लोमेटिक अपने लिए कैसे बने? करेक्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, but whenever you sit with yourself, try creating some long-term visions, long-term plans, right? And I'm sure something new will open up for you. मतलब आप सोचोगे अरे अच्छा ये कभी सोचा ही नहीं था, ये चीज मेरे को चाहिए, right? So try doing that. What is the long-term thing that you would like to, achieve, you like to apply, right? Remember this, right? Also, do you, just in case I'm asking, do you love reading, writing, or anything related to this? हाँ जी. What do you write, or what do you love, writing or reading? Reading. Okay. So do that whenever you are alone. Do that. Thank you, sir. Okay. Okay, guys, thank you so much for being here. So it's 9:30. I'm going to close this, and I will see you tomorrow again, 6:45 p.m. All right. Have a beautiful day, beautiful night. You Bye-bye. too. Night. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Bye.